जय भारत, जय संविधान। I am Bharat, I am Sanvidhan. I was once all over world. Now I am only in geographical Bharat. Bharat, a nation which used to lead world and also leading world now. Bharat, of course, second name is India, though according to constitution, first name is India, but I'm calling Bharat first name and India second name. And there is no other name that can be given to this country. It was before some other name, but now Bharat is its real name. Bharat and India given by British. Bharat is original name and Hindustan does not exist at all. Mind it, all those people who chant Hindustan, this is not Hindustan. Mind it. It's not emotional statement, it's a real statement. Jai Bharat. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता एंड वंदे मातरम सत्यमेव जयते. Bharat Mata, land of wealth, land of soul, and land of faiths, land of various races, and it contains everything that other nations do not. I am feeling pride that I got my travel of earth on this area, my world, earth, you can say, my travel on this planet stationed in Bharat, India. This station of Bharat, India is very big on complete network of this world. I am lucky in every sense that I was born in this land of multi aspects, multi natural wealth, multi weather conditions, and multi humanity and multi all creatures. We are and were too rich from this point of view, from sentimental, emotional, and from brain viewpoint. A country that must be pride, must be having proud of itself. I have proud that yes, of course I have pride that I belong to this world. World is my first you can say destination, and then Bharat. Bharat is not a country that hates world. Bharat is a country that loves humanity, that loves brotherhood, that loves family, that loves a clan, and that loves creatures. Bharat is not a religious country. Bharat is not a sectarian country. Bharat is a human country. Human, a first product developed and generated by superpower God. We were very innocent, very gentle society, and that's why we had been invaded by foreigners for thousands of years. We were invaded by unknown, we were invaded by Aryans, we were invaded by Mughals, we were invaded by British, and now we have been invaded by our encroachers in constitutions. Our constitution, which we generated, we devised in 1950, applied it, and before that we were governed by our last slaves, last masters. Those are called British. They enslaved us for many decades, and we submitted to them. And before that, we submitted someone else, and before that, someone else, Aryans. My Why I'm telling this? Because just to refresh and just to remind youth of this time, youth who are always called future of every nation. We have more than I can say 40 crores or 50 crores youth of all ages, those who are studying, those who have studied, working, and those who are in lower profiles of schools and universities. Bharat is for all. We cannot differentiate Bharat based on religion,
based on caste and based on something else. We can differentiate citizens based on capabilities, based on merit, and based of culture, but not based on what I said. They follow whatever God they believe in, that is their individual or family issue, not national issue. Politics, political system, governing system is one thing, but public life is another. We may be Hindu, we may be Muslim, Sikh, Isai, Parsi, Baud, Muslim, or whatever. It makes no trouble to each individual or individuality or society that either of these religions impacts upon us. We don't accept impact and adversity by one or other, but unison, harmonious environment, integrity, friendship, interfaith trust are all must parameters. Otherwise, we cannot call ourselves Bharat. We know that public do not accept what I say. I don't care because they are misled. People are misled sometimes due to their low understanding, low degree of understanding. First of all, first religion that we consider majority religion, people call it majority. Actually, there is no such religion. We all believe in Vasudev Kutam. And first we have to understand what is Vasudev and what is Kutam. Kutam is whole family, clan, integrated, extended, and internal and external family, all. That's called, you can say, Kutam. From both, from the female side and from male side, now Vasudev, what is Vasudev? Vasudev means it's the name of someone, some power, but it says that whole family, whole world is itself one family, owned by us. Fine, we agree with that. Some power, but all believe in superpowers, only names are different. Some believes in Hindus, so-called claimed deities, some believe in Islam, some believe in Christianity. It doesn't matter to me. As far as human is human. Human doesn't turn to be ill-thought person. Human is a gift. Humanity is a gift to world that go and work for me. It's you, God told you. God asked me, go and work there. I forgot that. I was there in my queue when the duties were allotted. I was told, go and do this. That time I remembered, but when I entered my body and expanded, it's unzipped. I could not understand what I had to do. But whatever I am doing now, or you are doing now, are commands of God. You were made by God, I were made by God, you are manufactured, you are designed, you are produced, you are processed, and same way I was processed. There were no separate machines for these religions. I did not get a document from God's office that this is your identity card, take it and go there. There's identity card, that's something else not related to religion. I never got a mandate from God, go you are Hindu, you are Muslim, and work as Hindu or Muslim. That is unfortunate. I hate such kind of differentiation. Of course, I was born in a family who believed in something, but I don't believe in that. This is my charter to decide what I do in life. Just like I decide my profession, of course, parent advice, but ultimately, student has to learn. Child as a student has to learn. Whatever I did myself, I achieved myself for me, for my career, for my future. That's my decision. What I do, which job I should join is my decision. Which I do is not, I cannot, my father or mother, I cannot hold them responsible for my decisions. Same thing, I can decide which fact, which faith, which sect I should follow. That's my decision. Based on either sentimental foundation or based on logical foundation, that is up to my decision. No one can stop me from that. But it doesn't give me any fundamental right, any fundamental attitude that I am better than someone else, because that was my decision and your decision is your decision.
I didn't get certification from God claiming that I am this one. No, I don't have. And I don't want to because my relation to God is personal, individual. No one has any right to come onto my seat and ask me to do this. No, I cannot do this. Practice this or practice that. That's complete nonsense. Unfortunately, major political people in the world, including our country, play a game of or religious cards. They play. They play in Palestine and Israel. They play in Iraq and Iran. They play in, mostly in our country, Bharat, and elsewhere. People play. Actually, they play. It's a disease all over the world. Everybody knows that one day everybody has to go. We have to leave this world. In spite of that, we forget every time that we do not know our future, we do not know our destiny. Yet we do all this. We should not do it. Unfortunately, people do not understand this. Society doesn't understand that. What's happening in Bharat, India now? We say, we people of this country, Bharat, always are SSSDR. This means we people of this country, Bharat, India, having solemnly resolved to constitute our country into a sovereign, socialist, secular, democratic republic regime so that our people are ensured their justice, their liberty, and their equality, or you can say faith, equality, and their opportunity, everything. Justice must be there, and brotherhood must be created. Promotion of brotherhood, fraternity, harmonious life must be created according to our constitution of Bharat preambles. Preamble is very powerful structure of our constitution. What's called preamble means means mother, before mother. Mother is conditions and contract. You can say articles in contract. So Bharat is preamble. Bharat, in fact, is preamble. It's not something else. If we follow preambles and these are we people, we made this, we did this, we allowed ourselves this, we approved this, enacted this, and did everything for this preamble. For me as an individual, I consider preamble as my framed Bharat, and articles are, we can say, power of that, Shakti of that, motherhood of that. So it's something else. It's called Bharat Mata. We have to understand what Bharat Mata is. Bharat Mata constitutes of all citizens of this country, and we all are constituted of Bharat. No one is foreign to an extent. We citizens of this country are related and interacted, connected with each other. Then we say Vande Mataram. Yes, Vande Mataram. Salute to our motherland. Definition of our land. We define what our motherland is. That is very important. And I'll just speak in English only because it's sometimes very difficult for people to understand this in you can say in so just one line I'll say in the Israel language is Vande Mataram, and this for mother. Sujalam, Sujalam, I wrote Sujalam, Sujalam, Sufalam. I call it Sujalam, means water is very powerful. Sujalam, Fal, fruit is very powerful. Sujalam, Sufalam, Mallaja, Shitalam, Sasya Shyamala Matram, Sujalam, Sufalam, Mallaja, Shitalam, Sasya Shyamala Matram, Shubh Jihot se Naam, Puli Kapti Yaminim, Full Kusumit Dram Dal Shobhim, Suhasini, Sumudra Bhashanim, Sukhda Vrinda Matram, Vande Matram. This is first one, and I'll just go to English one. I says, Mother, I salute thee, rich with my hurrying streams, bright with orchard gleams, cool with thy winds of delight, green fields waving, mother of might, mother free, glory of moonlight dreams, over thy branches and lordly streams, clad in thy blossoming trees, mother, giver of ease. Laughing low and sweet, mother, I kiss thy feet. Vande Matram, Vande Matram. Mother, to thee I bow, who hath said thou art weak in thy lands, when swords flash out, millions hands, and millions voices roar.
dreadful name for shore to shore, from shore to shore, with many strengths who art might be installed. Today I kill mother-in-law, I call mother-in-law. Today I call mother-in-law, mother-in-law, mother-in-law. I call mother-in-law, who saves, rise and save. To her I cry, whoever her food drove back from plain and sea, and shook herself free. Thou art wisdom, thou art law, thou art heart and our soul, our breath. Thou art love divine, thou in our hearts that conquers death. Thine strength that knows harm, thine beauty, thine charm. Every image made divine in our temples is but thine. Thou art Durga, lily and queen, with her hands that strike and swords of sheen. Thou art Lakshmi, lotus throned, and moves 100 tons, pure and perfect without peer, motherland thine here, rich with thy hurrying streams, bright with thy orchard gleams, dark of hue of candid fail, in soul thy jewel here, my glorious smile divine, loveliest of all early lands, showering wealth from well-stored hands, mother, mother, mother mine, mother's sweet and I bow thee, mother great and feel, Vande Matram, Vande Matram. This is what we have, Vande Matram. And we have to understand beauty of our land, beauty of motherland, what we got from one land, best water, best air, best moon, best sun, best air, best wealth, best resources, and best the power of mother that feeds us. हमें सब मिला वंदे मातरम से कहने में कहा जाता है भगवान हो देवी हो सब कुछ हो आपने सब दिया हमको पानी अच्छे से अच्छा दिया हवा अच्छे से अच्छी खाना अच्छे से हवा दिया सब कुछ आपने दिया हमको अपनी सुंदरता दी अपनी शक्ति दी अपनी आत्मा दी अपना शरीर दिया सब कुछ आपने हम बच्चों को भारत को दिया ये सब कहता है ये प्रकृति आप है स्वास्थ्य आप है आत्मा आप है देवी आप है वेल्थ आप है खाना पीना सब आप देते हैं और हमें क्या चाहिए यही तो वंदे मातरम है और क्या है इस बात को जितना अच्छी तरह समझेंगे उतना अच्छा देश को समझेंगे और यही देश आपको दुनिया को समझाएगा कि आप हैं क्या हम जानते हैं हमारे संविधान हमें क्या कहता है हमारा संविधान के प्रेमल से हमें क्या कहते हैं हमारे युवा को समझना चाहिए हमारी जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनको बताया जाना चाहिए वो समझेंगे शायद नहीं इतनी जल्दी से बट वी हैव टू टेल देम फैक्ट्स आर our kids must be told what our constitution is they must be told what is our freedom struggle what was our freedom struggle what is behind that they have to understand all that and if they don't understand that it shall cause problem unto us after all, we have duty in addition to rights and linked to rights. Everybody has duty, but we have to abide by Constitution. We have to abide by its anthem. We have to honor all our institutions, all our respects, and we have to upkeep our ideals that freedom struggles had at time. When we have to keep all safe our natural resources. We have to save our power. We have to save every child, every woman, and every man, and all students, and all scientists, engineers, and doctors. We must support all of them. And we have to make mandate education for everybody and we have to do everything that's required for development and better future of this country. That's what we say. हम भारत के लोग हैं भारत के बारे में करना चाहते हैं हमें सभी ना होगा कि हमें क्या करना है हमें अपने कर्तव्यों को संभालना होगा मानना होगा जो संविधान कहता है हमारे बारे में हमें जो देता है गिफ्ट उसको मानकर उसको शक्तिशाली लेकर जिम्मेदारी उत्तरदायी समझ के हमको आगे बढ़ना होगा यही तो हम चाहते हैं ये होना चाहिए हमने स्ट्रगल किया कितना स्ट्रगल किया हम सब जानते हैं सैकड़ों सालों से स्ट्रगल किया we just struggle for decades and centuries just to get back our power from British and then before that Mughals and before that from someone else a long sequence of 3,000 more we are people suppressed also some people came from we call them in Charlians Euro-Asians actually the humans Aryans of the year they came from Iran they came from Iraq they from Afghanistan they from Turkey they from Russia and many other parts of the world they came here and they survived here we had originally Dravidians here or you can say Muslims those are called fundamental real original citizens of this country they were encountered, they were invaded by Aryans and Aryans defeated them, pushed them back into the south part of this country and many other north areas. And these people occupied this land, this 3,000, before 3,000. Well, they are now citizens of this country. I don't mind that, but question history cannot be forgotten, cannot be overlooked. The problems have to end. These people are so smart, they have a little educated, I think, better than our people. I don't know what reason they started controlling others and they got success in that.
After that, the Mughals entered here, but through somewhere or other, Mughals ruled of many, and these people had disputed with them many times, and they never liked Mughals, and Mughals were replaced by British. And British came, and these people are happy with this. Padnitsokali can say, they are called Brahmins, we call them now, and they're actually Aryans, the major portion. So actually, you can say Aryans are invaders, then Mughals were invaders, and British were invaders. So who are real Bharatvasis? Mulyawasis they are. Generally, we call them in English, in Constitution, SC, ST, etc. Our SC, ST are actually Mulyawasis, originally Bharatvasis, Indians, and they were big before. But post-Aryan time, they started being downtrodden, and they were suppressed. They had been suppressed for centuries, many centuries by these people, and a caste system was evolved because of this nonsense activity. Manu power started on this, and fraction was created in society, which continued for thousands of years, and is still practically it's all there. So four classes occurred. We don't want to discuss that. But fact remains that Brahmins and Rajputs and a part of other society, which is called society which work in office, in fact, or baniyas or girls, those people considered themselves upper, and this SC and ST were considered lower profile. They considered slaves, like slaves, not allowed any facility for centuries, suppressed mentally, physically, and that is not admissible now. In this age, Muslims in Bharat now they call Muslims 25 crores Muslims. But who are they? Are they people migrated from Muslim world? No, they are not that. These people actually are also Bharatvasis, but they were poor. They were not very powerful, and some mighty invaders forced them either by greed or by other means to convert to Islam. And these people did that. Means everybody is not very rigid and powerful in our country that can resist other oppose invaders. So they did, and they converted to Islam. I don't mind it. If today I have followed some religion and I convert that to someone else, that is my choice. Okay, these people were not by choice but by force converted to Islam. Doesn't matter. Islam is also a religion. We have no single religion in this country. We respect all religions, so no problem. They are, after all, children of this land originally. 1947 brought our geography enacted by British into two nations, two dominions called India and Pakistan. India means Bharat and Pakistan means Pakistan. India Independence Act 1947. If you can read that, it is good. If you cannot read that, I'll just tell you basics and you can say abstract of that. 1947, a year of our freedom from British, appointed date August 15, 1947, for initiation of two nations, Bharat India and Pakistan. Appointed date 15th August 1947 according to that constitution. Effective that date, Government of India Act 1935 invalidates. Replaced by India Independence Act 1947. All responsibilities owned by British resign or withdrawn immediately on that day, and future of Bharat India was left to Bharat India population, people, and Pakistan people. Two nations appeared from one nation, Bharat, or at that time called India.
This is India Independence Act 1947 and Government of India Act 1935 was annulled by that. But it was clearly mandated if Bharat requires to use certain law which were enacted before 1947 or post 1947. If extension was required, there was no barricade by British regime, but there was just no responsibility of these two dominions to shoulders of Britain. So we have to be very clear about this. I think habit of our people is diminishing. Previously, our forefathers used to read documents, understand documents, and treat them as if something is permanent. But current generation and generation in past also did not concern about documents understanding, documents contents studying. They did not concern very well because the reason was they were not very well educated people, and of course these documents are in English. It's not easy for everybody to grasp basics and details. I'm not saying people don't do it. In general, I'm saying people do not respect reading documents. Had we respected ourselves, had we involved in reading that, things would have been different. What we believe in, hearsay. If somebody tells me something, I receive that and transmit it to someone else. This is our culture. Though it's not very good, but it is practical. What can I do? And what you can do? Well, India got independence. Bharat and Pakistan were created. This act never shows, never mandates that this was done based on religion. No religion was involved. This only misconception, misinformation that is disseminated among nation, Bharat. These are political regions and no other regions. What was there before, what was not there, that is nothing to do with that. Because fact is now that we are two nations, Bharat, India and Pakistan. What Pakistan is after 1947, I am least bothered. But before 1947, before August 15, 1947, Pakistan was a part of this country and therefore respected. Before 1947, we respect that part because that was our own nation. We all one blood war. We all had one family. You can say nuclear nation family. If you cannot say nuclear nation, it was nuclear in the sense of society, not in the sense of atomic bomb. We are those people. Now it's separate one. Those two dominions have become three dominions, and we know which is that, which one is that. So it's very difficult sometimes to really understand our society. It's very easy to spread fake news. It's very easy to mislead people. Everybody can do that. But comprehensive study, comprehensive analysis are very significant. We are all educated people, and education does not confine itself to your profession or your discipline or your honorary subject. I want to use mind that God has given to everybody. Use that. It's not necessary that you involve teacher every time. You make yourself teacher of your own, use your mental power and think of. Do not follow these leaders who are only interested in sectioning society, into divisioning society, and then further divisioning and divisioning and divisioning, which divisioning never ever stops. But people are not politicians. If politicians are there, people are above politicians. Politicians have established a character, established an image that they are not public supportive. It's not 1947, it's 2019. A lot changes have come to our service system. Service system means political system. Politics means serve people. Serve people without any personal or individual interest. But that definition does not exist anymore.
Politicians have converted into professionals, they have converted to occupation, they have converted to commercial work, they have converted to business work. We can say politics is now business, complete business. And when there is business, there is competition of business among business societies, among business houses. Same thing as a Congress house, BJP house, this house and that house. Therefore, I do not respect them. But they are not respecting public. These people are required to serve public, to see their problems, understand their problems and solve them. But that does not happen. Virtually it's not happening. Therefore, it's my absolute right as a citizen of this country to condemn all those. Damn them. Because they are not thinking for people, whoever they are. We are a constitutional government. We are a constitutional society. And we have to chart out our problems into solutions. We have to find solutions ourselves. If we keep fighting, we shall not reach any agreement. If you don't talk, if you don't discuss, if you don't understand each other, this country cannot be forever, cannot be called a integrated nation, a nation that unites and that is powerful. If you fight, you lose power. If you talk and decide, you maintain power. And if you work together, you build up your power, you augment your strength to new heights. Augmentation is required, coagulation is required, unification is required among society. Coagulation in the sense that we have to respect each other, we have to move together, then many further groups, and we make ourselves one and one, oneness. Well, it should be clear to you that I'm not talking any philosophy, I'm not talking any theology, I'm not talking something, but I'm talking about Bharat. We are lucky, we are fortunate that those who were born in free Bharat, India, did not encounter struggles which were faced by our forefathers from our masters, cruel master British, and before that someone else. We are born lucky children and we must respect that self. But it is not happening because we do not know value of freedom, we do not know value of independence, and we do not know devaluation of slavery. How you have to live in slavery, that we are not used to. We are only thinking everything is fine. Yes, you have money, everything is fine. You have food to eat, everything is fine. But you remember those days? Just imagine how those people could survive for decades in those days of British regime and before that. Those were very rigid people, very serious and powerful people, not because of money or not because of education, because of will. They had a will to live, to get liberation, to throw those masters out. Those were great people. And we are very low profile people. Low profile means you waste your father's earnings, your father gave you money, your father gave you everything, your mother gave you everything, and you spend that without any objective. No focus on objective, and in fact there is no objective because we are just living just like animals live, for sake of living, for sake of eating, sleeping, and generating our kids. That should not be our objective, to make India, Bharat a great nation. It was great, it is great, it shall remain great, but profile of great should be upgraded all time. We have to uptake this profile to higher levels. That is what we are all here in this country. 130 crore now, 130 or 140, whatever it is now, and remember 30 crore that time. 30 crore in 1947 were 30 crores. So that time you are powerful or we are now powerful. We have to understand this. 30 crore people of Bharat, Pakistan, that time you can say Bharat, India, those 35 or 30 crores people were so powerful
that they pushed off British. Now we are 140 crore or so, approximately four times in 400% rise, 300% elite. I'm not talking of Pakistan, no use, because they are not our country now. I'm talking of our country. 30 crores has moved up to 140 crores. 400% multiplication, and we are calling ourselves Bharat India now, ruled by and under Constitution of Bharat, Bharat Sanvidan. Constitution is not simply a book. Constitution is soul and power of soul, that is called spirit. If you don't respect this, if you condemn Constitution, then it's fire on us. We set ourselves on fire. Because Constitution is fire extinguisher, Constitution is developer of our society, Constitution is guide to us, and Constitution is principle of our nation. Those who consider just baseless, useless, and condemn it, they do not understand what we are. Those who think they can throw it, they can thrash it, they are living in fool's paradise. I'm calling to those all who speak against this that they have to change their mind and they have to think that they are honor of this Constitution and Bharat. There was a time when people didn't know what Constitution was. Of course, our fathers and their forefathers were too smart, to an extent rigid. Attitude is concerned, will is concerned, destination is concerned. But current one, we are aroused only, we are emotionalized, but we do not know reality. This reality must be known. We have our own structure given by Constitution, and we are all living in that. Constitutionally, governments are established, systems are established, institutions are established, and people are, of course, there who generated this Constitution. This means we have to think many times before doing something which goes against us. Our Constitution clearly says, mandates that we are sovereign, socialist, secular, democratic republic. These are five powerful fundamentals and we can say principles that we have undergone, all time we are undergoing. But we have to see result also. What result we are achieving on this? There is no measurement of that, but a feeling of that must be there. Before 1947, hundreds of statutes were there and still there. Actually, they are still in force, and that's called, you can say, existing law according to our Constitution, which laws pre-existed independence. Is still continuing in title of existing laws. Existing laws that time, 1947. And there are many laws that were framed after for post-Constitution 1950. Many, I think more than hundreds amendments are there, and many changes in laws are there. Many, can say unlimited one. But we have to maintain preambles of our Constitution that no one has right to change. You can change anything, you can alter anything. You know, alter any clause, any article in Constitution or in any act, Parliament Act, that is always drawn and approved under constitutional arrangements. The constitutional law is supreme one. This basics every citizen, including children, are required to understand, not in full details, but at least what is cover of the book, we should understand. And if we cannot understand this or we ignore this, we ignore our system,
We ignore our society, our nation. Disputes have been going on. I used to say we are a sleeping society. We are a society that is careless. We are a society that doesn't take care of people. We are a society that looks at faces of other nations but doesn't work itself. That was right. We have been sleeping and we have been acting non-serious. No doubt to that style of thinking. I have that style. I always talk negative first and then positive, though people say never think negative or never think optimist. That's right. We should not think. But don't forget, negative and positive are related. You cannot get positive without moving or dealing negative. Never. Because both move in sequence. If you are negativated, you are lucky. If you get negatives, you are lucky in fact. Because you know other world, negative means other world. And positive means world which we can see by eyes. There is a world behind your eyes and mind that is negative, which you do not know, you do not get, that's why it's called negative. But mathematical negative and mathematical positive are powerful. We all are composed of atoms, electrons, protons, neutrons, etc. You know all that chemistry. It may be biochemistry, or inorganic chemistry, or maybe organic chemistry. They're all constituted of materials, matters, body. It may be bones, it can be skin, it can be flesh, or whatever. That is fact of life. That we are having billions of those kinds of atoms in our body. It has. Brain has unlimited power. Brain means genius, powers. It's mind that makes world. It's not our physical work alone. Physical work is ruled by our spiritual power and soul power. What we do in this country for us is for us. And all results we have to accept. Positive for us or negative for us, good for us or not good for us. Doesn't make a difference. We, after long and detailed elaboration of Constitution, got this Constitution, and preambles are moving with us all the time. It's called universal definition. There's preambles, powerful than all other provisions within Constitution and other laws. Preambles cannot be changed arbitrarily or even by Parliament, because this is first and legal documents of this country, which does not define specifically any religious title or name. But we have unearthed that pavement of preamble on which we are walking. We have broken that. 1947 to 2014, generally laminar flow, a flow without any turbulence, without any flying waves, you can say, safely moved. Level of education got up. People got free education, free support. But gradually we moved and reached 2014 with many ups and downs. Of course, there are ups and downs, but we never stopped. Society generated itself, grew itself, promoted itself to higher levels. Education, health, all other sectors. Women was empowered, people were facilitated, and that happened. But you can say since 2014, unnoticeably changes started
and a liquid was added to our washing machine, can say, that impacted upon its complete assembly. We should be, according to preamble, sovereign, socialist, secular, democratic, and republic. These meanings I have explained many times, and you must be knowing. But 2019 is sending fire signals. Fire is being released in this year by none other than our own servants of government of Bharat, who were elected through Lok Sabha into government, but in place of delivering ice cream, cold milk, cold coffee, they are delivering fire to society. Fire, in a sense, that impacting upon present and future of people. We are citizens of this country, and therefore we are bound by preambles. These preambles have been, you can say, impacted by a sword, so that it can convert into pieces, many pieces. That's what our government and POI have done. Why I am telling you this? Many sequences have happened. We have all all sects with us. We have Vedic, we have Dharmic, we have Hindus, we have Muslims, we have Bauds, we have Parsis. We have all sects with us. But there is a portion of people, this section of people in our country who are, you can say, allergic to Muslim world of our country. They may be allergic, they may feel whatever they want, but they cannot change history. You cannot change history and should not change history. What we are actually. Pakistan is there, our neighbor. Bangladesh is our neighbor, and many more neighbors are there. China, you may say other nations, Sri Lanka, Bhutan, etc. They are our nations. They are our neighbors, nation neighbors. That fact cannot be changed. That's right. But we are not even respecting those facts. Why? How? भारत एक ऐसा देश है पूरे विश्व में जो अपनी शांति के लिए, अपने इतिहास के लिए, अपनी शक्ति के लिए, चाहे धार्मिक शक्ति हो या वो अपनी भावनाओं की शक्ति हो, एक राष्ट्र की हैसियत से हम धार्मिक नहीं हैं, बिल्कुल नहीं हैं। राष्ट्र की हैसियत से हम जो बताया प्रभु सत्ता वाले हैं, समाजवाद वाले हैं, पंथ निरपेक्षता वाले हैं, लोकतांत्रिक हैं और गणतांत्रिक हैं। इसके अलावा हम वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं और सारे वो लोग जो विद्या प्राप्त हैं, खेती करते हैं, नहीं करते हैं, वो सब लोग जो मजदूरी करते हैं, जो भी करते हैं, वो सब हम हैं। ये हमें प्रियम्बल नहीं देता, ये नेचुरल है। प्रियम्बल कहता है हम भारत के लोग, बहुत बड़ी बात है, हम भारत के लोग, ये बात कह के वो शुरू करता है। किसी धर्म का नाम नहीं लेता, किसी कास्ट का नाम नहीं लेता, अच्छी बात है, नहीं लेता, ना लेना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को हाजमा सही नहीं रहता। कुछ लोग जिन्होंने इस देश की आज़ादी प्राप्त करने के लिए 1857 से लेके 1947 तक
कुछ नहीं किया, ना सोचा करने के लिए। उन लोगों की वजह से कुछ समस्याएं इस देश में पैदा की जा रही हैं। वो लोग जो अंग्रेजों की रिश्तेदारी रखते थे, अंग्रेजों से दोस्ती रखते थे, नहीं चाहते थे कि अंग्रेज जाएं। अभाग्यवश उनमें से बहुत से लोग आज हमारे संस्थानों में हैं, हमारी सरकार में हैं, हमारे विधायिका में हैं, और यहाँ तक कि और भी जगह है जो कि बताने का फायदा नहीं। सब जगह बैठे हुए हैं और वो आज वो क्लेम करते हैं कि वो जो चाहेंगे वो होगा, मतलब वो जिस तरह को वोट देना चाहेंगे उस तरह से वोट होगा। उनकी सोच ऐसी हो चुकी है, उसका कोई क्या इलाज करेगा मैं नहीं जानता। लेकिन उन लोगों ने देश को आज़ाद होने में टांगें अड़ाई थी, उस बात को भी हम भूल जाते हैं। वो पाकिस्तान से आए थे उस समय, कहाँ से आए थे उस समय, वो सब भूल जाओ। अब वो भारत के लोग हैं, चाहे वो किसी भी पंथ को मानते हो, वो भारत के लोग हैं, इसमें कोई झूठी बात नहीं है। पर भारत की ये सोच ठीक रहेगी क्या कि हम एक दूसरे को गलत कहें? एक दूसरे को गलत कहने से क्या होने वाला है? हमारे प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं हमें इससे मतलब नहीं। मुझे जो मतलब है, जो आपको होना चाहिए, हमारा संविधान क्या कहता है। हमारा संविधान कहीं नहीं लिखता है कि हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की बात करेंगे या किसी और की बात करेंगे। हमारा संविधान सिर्फ कहता है कि हमें भारतीय नागरिक को समझना है, उनसे बहुत कुछ लेना है, और जब ले जाएंगे उनसे, पा जाएंगे उनसे, तो फिर छोड़ देंगे। ये सोच किस किस की है? जो भारत का युवा अगर संविधान को समझता है, संविधान का सम्मान करता है, खाली सम्मान करने के लिए नहीं, उसको अपनाने के लिए। वो सभी लोग जो भारत के संविधान के नीचे मस्तक रखते हैं, अपने आप को रखते हैं, इस देश के लिए वो वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे नहीं है। आज हम जानते हैं सरकार किसकी है 2019 में, हम जानते हैं वो कौन है, और हम ये भी जानते हैं कि उनके ऊपर ये जो आर्टिकल्स हैं, ये जो बातें कही जा रही हैं प्रीएम्बल्स की, दूसरी या अमेंडमेंट की, उन पे भी लागू होती हैं, अच्छी तरह से लागू होती हैं। जो आज कहते हैं कि देश हमारे हिसाब से चलेगा और हमारा हिसाब संविधान है, बड़ी अच्छी बात है, देश आपके हिसाब से चलेगा, और आपका हिसाब भी होना चाहिए। बताइए आपने कितने पैसे दिए और कितना दिया? आप इस हिसाब नहीं देते, ना देना चाहते, लेकिन भारत तो मांगेगा। आप कुछ भी नियम बना लीजिए, जब तक पब्लिक नहीं चाहेगी, पब्लिक उन नियमों को नहीं अपनाएगी, तो पब्लिक अपनी सिक्योरिटी करना जानती है। आपकी सिक्योरिटी कर बहुत लोग हैं, इसलिए हमें उस बात की भी चिंता नहीं। आपने संशोधन किया एक एक्ट में, 1955 में जो एक्ट बना था, वो एक्ट सिटीजनशिप एक्ट 1955, वो ऑलरेडी एक नियम है, उसके हिसाब से नागरिकता प्रदान की जाती है। आपने उसका संशोधन किया और उसमें एक पैराग्राफ में इतना चेंज कर दिया कि लगता है कि अब तो मरना ही है। पर मरना क्या इतना आसान होता है? नहीं होता है। हम कह रहे हैं इन लोगों को, जो ये हमें कह रहे हैं कि हमने ये नियम पारित कर दिया है लोकसभा से, राज्यसभा से, और राष्ट्रपति ने साइन कर दिया। कोई बात नहीं, आपने पारित कर दिया, अच्छी बात है, आपका काम है।
लेकिन आपने जो पारित किया है, हमें उससे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। हमारी प्रॉब्लम कुछ और है। हमें इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन पाकिस्तान या बांग्लादेश से आया है या रह रहा है या हो सकता है आए। इससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम पहले भी साथ थे। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और आप क्या कहना चाहते हैं, प्रश्न वो है। आपने उनको कहा ठीक है आप आ गए हो, आपको वहां तंग किया गया इसलिए आप आ गए हो, तो कोई भी आएगा, तंग किया जाएगा तो कोई भी आएगा, ये भी प्रैक्टिकल बात है। उसके अलावा आप क्या सोचते हैं? उनको नागरिकता दे दिया रजिस्ट्रेशन के बाद, अच्छी बात है, आप नागरिकता दे दिए उनको, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको देने का हक है नागरिकता, दीजिए। पर प्रश्न कुछ और है, बात कुछ और है, बात नागरिकता की है ही नहीं। अगर आप चाहते नागरिकता देना तो किसी और नियम में भी दी जा सकती है, लेकिन आपके मन में कुछ और प्लान है, वो हम जानना चाहते हैं, उसको हम डिस्कवर करना चाहते हैं। आई एम इंटरेस्टेड इन दोज माइंड्स बिहाइंड दिस एक्ट व्हिच आर रियल प्लान्स। क्योंकि क्या है, देखिए, हमने कहा भारत ये है, जो 5 बताए हमने SSDR वाले, वो है भारत, और हम हैं वो। इस देश में सारे धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन संविधान कहता नहीं कि कौन कौन से धर्म के लोग रहते हैं। संविधान इस बारे में कोई बात नहीं करता, बड़ी अच्छी बात है। सब नाम नहीं लिखे हैं, एक भी नाम नहीं लिखा है, और सब रह रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है, ये समझना इस बात को। बिना लिखे धर्मों के नाम के यहाँ सब लोग रह रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। आप उस संविधान के नीचे जो 1955 में भारत का नागरिक कानून बना, उसमें भी कुछ नहीं लिखा ऐसा जो आप चाहते हैं। और भी दूसरे एक्ट्स हैं जो सरकार से मिलने के लिए मजबूर होंगे, और वो समय आ गया है। आपने कहा जो भी 2014 तक आ चुका है इस देश में प्रताड़ित होकर, आपने तारीख किसके तारीख मुझे याद नहीं है, 2014 में जो भी आ गया है प्रताड़ित होके हमारे साथी कंट्रीज से, उर्मिला और पांडे और जो भी हैं, उनसे हम अलग हो चुके हैं। यही बात अगर कोई मुझसे पूछे आके कि आपको क्या लगता है इसमें गलत क्या है, मेरा साफ उत्तर होगा, बात गलत सर की है ही नहीं। जो भी आपने CA बनाया है, उससे बात ये नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, बात वो है ही नहीं। यहाँ बात कुछ और है। बात यहाँ क्या है, बात इतनी छोटी नहीं है, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी बात है। ये सब नाम आपने ऐड किए इस कानून में, हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम था ही नहीं इसमें, हिंदू सिख ईसाई पारसी बौद्ध जैन, ऐसे 7 नाम हैं जो उसमें नियमित हैं। उन नामों से आपको लिखने की आवश्यकता क्या थी, आप नहीं बताएंगे, जबकि उस नियम में 1955 के में किसी का भी नाम नहीं लिखा धर्म का। भारत की नागरिकता किसी धर्म से लिंक नहीं होती, भारत की नागरिकता व्यक्ति से लिंक होती है। कोई भी व्यक्ति जो भी भारत में रहता है भारत का नागरिक है, इसके माता पिता या कुछ और से 2-3 कंडीशंस हैं, वो लागू होती हैं, सब पे लागू होती है। अब बात करते हैं कि आपने धर्म के नाम उसमें क्यों लिखे, क्या आवश्यकता है। आपने जानबूझकर वो नाम उसमें लिखे जिसमें मुस्लिम शामिल नहीं है। मुस्लिम आपके हिसाब से वहां का नागरिक है, वहां रहे, कुछ भी कमाए कुछ भी खाए, बात वो नहीं है।
बात कुछ और है, क्योंकि संविधान कहता है आप किसी का नाम नहीं लेंगे धर्म का, आप किसी पे अटैक नहीं करेंगे, शांति से रहेंगे, आप उसको नामों को लिखे बिना भी कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से कौन कौन लिया जा सकता है, कौन कौन नहीं लिया जा सकता है, ये सब बातें करने की नहीं थी, बिल्कुल जरूरत नहीं थी और आज भी नहीं है। लेकिन हालात ऐसे कर देते हैं लोग कि क्या करेगा आदमी, उसको करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। लेकिन आप ये लिखे बिना भी तो कर सकते थे। जो हिंदू हैं, मुसलमान, जो हिंदू हैं, सिख हैं, एक्सेट्रा, जो चेन आपने रखे उनको तो हम वेलकम करते हैं, उनको चाहे कितने भी मुकदमे हमारी तरफ चल रहे हो, हम उनको वेलकम करते हैं सामान्य आपराधिक दृष्टि से। और बाकी जो लोग वहाँ हैं, मुश्किल से 2 दर्जन नहीं हो गया, 80 तारीख में ज़्यादा हो सकते हैं, हमें पता नहीं। बड़ा अच्छा लगता है क्या कर कि देखो हम दूसरे लोगों को, हिंदू हैं जो, सिख हैं जो, दूसरे हैं, उनको परेशानी से निकाल रहे हैं। आपने कल्पना की और मान लिया जाए कि आप हिंदुओं के रक्षक हैं, मान लिया जाए, मान लेते हैं आप भी हिंदुओं के रक्षक हैं, मतलब ये है कि आप मुसलमानों के रक्षक नहीं हैं। इसका मतलब तो ये भी होता है हिंदू को रखेंगे, सिख को रखेंगे, क्रिश्चियन को रखेंगे, इसको रखेंगे, उसको रखेंगे, लंबी लंबी कहानी कार बन गए आप। चाहते क्या है? संविधान नहीं कहता ऐसा कुछ भी, आप कह रहे हैं, मतलब आप जो कानून बना रहे हैं उस संविधान से भी ऊपर हो गया। कोर्ट क्या कहता है मैं उस बात को नहीं बात करना चाहता, क्योंकि आज की तारीख में तो कुछ और भी हो सकता है, हम बात कुछ और कर रहे हैं। संविधान मेरे अकेले के लिए नहीं है, पूरे देश की जनता के लिए है। भारत का संविधान 1950 ना ये किसी धर्म का नाम लिखता है, ना ये किसी ऐसी चीज का नाम लिखता है जो समाज के विरुद्ध हो जाए। ये है भारत का संविधान। एक नागरिकता कानून आप बना रहे हैं, अमेंड कर रहे हैं, और एक हिंदू शब्द जहां इस्तेमाल किया गया वो है हिंदू मैरिज एक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट में भी डिफाइन किया गया कि इसका सिर्फ पर्पस जो है शादी और तलाक से है। शादी और तलाक एक, फिर वही बात एक पॉइंट पे आके रुक जाता है, क्योंकि शादी एंड तलाक जो होता है देश के लिए नहीं होता है, अपने व्यक्ति के लिए होता है। हिंदू मैरिज एक्ट भी नहीं कहता ये देश के बारे में, वो कहता है किस तरह से शादी को माना जाएगा या शादी के तलाक को किस तरह ऑपरेट किया जाएगा। तो वो भी एक अलग दिशा में चला गया, वो देश के बारे में बात नहीं कर रहा। मतलब ये हुआ चाहे वो शरीयत कानून हो या कुछ हो, वो आपके समाज के लिए, जिसको आप धार्मिक रूप से मानते हैं या नहीं मानते हैं, उस पर लागू होता है, देश के ऊपर लागू नहीं होता। जब ये बात हमारा संविधान मानता है कि हम किसी धर्म की बात नहीं करना चाहते, क्योंकि हम सबकी इज्जत करते हैं, हमारे लिए धर्म एक संस्था नहीं है, धर्म एक आपकी पर्सनल लाइफ है। आप उसको मंदिर में बैठ के मानते हैं या उसको किसी बड़े विशाल जंगरा, विशाल जन तंत्र में मानते हैं या किस में मानते हैं, ये आप देख सकते हैं, हम नहीं देख सकते। लेकिन यहाँ उल्टा हो गया, आपने देखा, संविधान पब्लिक ने नहीं देखा। तो ऐसा क्यों? आपको पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से जिसको लाना है लाएं, कोई रोक नहीं रहा। आप सरकार है, पब्लिक की तरफ से आपको अधिकार है, पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट को देश की तरफ से अधिकार है, आप नियम बना सकते हैं, बनाइए, आपका काम है, अच्छी बात है। लेकिन आप अगर इस तरह का नियम बनाएंगे जिससे पिंच हो किसी को, तकलीफ हो किसी को, और उसको मजबूर कर दे कि वो आपकी बात को ना माने, तो किस तरफ जा रहा है आपका पार्लियामेंट, कहाँ जा रहा है राष्ट्रपति का पोज, कहाँ जा रहा है? आप ऐसी नौबत क्यों लाए?
आप कितने भी एक्सप्लेनेशन दें, बात हजम नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि आप जानबूझकर ऐसा कहना चाहते हैं। ये नेचुरल स्क्रिप्ट नहीं है, एक डिवाइस की गई स्क्रिप्ट है जिसमें से जहर और आग दोनों निकलेगी। वो आग निकलेगी और देश के नागरिकों को तबाह कर सकती है। वो आग मुस्लिम है इस देश में 25 करोड़ या जितने भी हैं, उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है कि आप उन्हीं को डाउनग्रेड करने के लिए सारे एक्टिव लाते हैं। चाहे वो फिर तलाक, ट्रिपल तलाक का कानून हो, नियम हो, या कोई और भी हो, आप ऐसे कानून लाना चाहते हैं जिससे लोग आपको हिंदू रहने का सर्टिफिकेट देते रहें कि आप हिंदू हो इसलिए आप अच्छे हो और मुसलमान हमारे अच्छे नहीं हैं। मुसलमान को कह दिया जाता है पाकिस्तान जा, हिंदू को भी कह दिया जाता है पाकिस्तान जा, चले जाएंगे, बना दो पाकिस्तान देश में, हम चले जाएंगे। अरे यार घन चक्कर हो, कुछ शांति की, अच्छी देश की बात क्या करो। भारत के पब्लिक की जो समस्याएं हैं उनको सुनने की बात, उनको हल करने की बात क्या करो। याद रख लेना, बनाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल होता है, समय भी लेता है, पैसा भी लेता है, मेटल भी लेता है, विज्ञान भी लेता है, सब कुछ लेता है, तब जाके एक अच्छे कप की चाय बन सकती, चाय अच्छे कप बन सकती, नहीं तो वो भी नहीं बन सकती। हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है, आपकी इस विचारों से है। आप जो लिखते हैं ये धर्म के लोग माने जाएंगे और दूसरा धर्म के जो नहीं माने जाएंगे उसका तो आप नाम तक नहीं लिखते उसमें। ऐसा क्यों? आपको लिखना चाहिए था साफ साफ कि मुस्लिम को नहीं माना जाएगा। आप भी जानते हैं कि आप ड्रामा कर रहे हैं। अगर आप लेना चाहते हैं वहां से कुछ लोगों को जिसको आप पसंद करते हैं तो साफ लिख देते कि हम इन देशों से उन लोगों को लाना चाहते हैं जिनको वहां की सरकार ने, वहां की पब्लिक ने परेशान किया हुआ है। इतना काफी था। क्या वहां पे मुस्लिम परेशान नहीं होंगे? कभी आप देख के आए? आप एक बार गए वहां, देखिए आना चाहिए था कि वहां क्या क्या होता है। कोई बात नहीं, देख के आए तो। लेकिन आपने ऐसा क्यों किया जिसके बारे में आपको नॉलेज ही नहीं? नॉलेज है आपको, मैं ये नहीं कहता नहीं होगी, लेकिन आप उसको गुमराह करना चाहते हैं, नॉलेज को ही गुमराह करना चाहते हैं। नॉलेज काफी है आप में, कोई शक नहीं है, क्योंकि जब नॉलेज नहीं होती तो आप ये स्टेप भी नहीं उठाते। ये स्टेप कोई बहुत सीधा साधा स्टेप नहीं है, कोई मक्खन ब्रेड का स्टेप नहीं है। ये एक बहुत दूर से देखता हुआ, राजनीतिक दृष्टि रखता हुआ एक ऐसा कदम है जिसके आगे चलने से बॉम्ब और आग चलेगी। पब्लिक इससे बहुत तंग होगी, प्रॉब्लम फेस करेगी आने वाले समय में, जो आप एक बहुत चालाकी से देश की लोकसभा को, देश की राज्यसभा को गुमराह करके लेकर आए। जो कुछ पार्टियां हैं उनको तो शायद समझ ही नहीं आया था कि ये है क्या भला, ये कौन सा बिल है, क्या बिल है। वो गए तो टेक्स्ट पे गए, उसके दिमाग नहीं लगाया। बिल में टेक्स्ट है, पहले ही पैरे में टेक्स्ट है सिटीजन एक्ट के, जो 1955 में बना सिटीजनशिप एक्ट, जो भी लिखा कि ये क्या होगा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, साफ नहीं लिखा, बशर्ते ये भी होगा। बशर्ते में आपने बशर्त कर दिया। इस देश में वहां से लोग आए जाएंगे जो बेचारे परेशान हैं, उसमें ये भी आएंगे, 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 बस। अब मैं पूछता हूं कि क्या वहां से आपको जो भी लोग लेने हैं, क्यों लेने हैं? पहली बात तो ये, आप कहते हैं जो हिंदू है वो, तो क्या हिंदू है वो? हिंदू बहुत देशों में है, मॉरिशस में भी है, हिंदू और देशों में भी है। इस बात से आप क्या प्रूव करना चाहते हैं? 1947 में सबको मौका दिया गया था, फ्री थे सब,
कोई धर्म के नाम पे मौका नहीं दिया गया था। 1947 का जो कानून है ब्रिटिश ने जो बनाया था हमारे लिए, उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा कि धर्म के नाम पे आपको जहां जाना है जाओ। यहाँ की सरकार तो समझ में नहीं, उसने कहा जिस तरफ जाना है चले जाओ, हम किसी को रोकेंगे नहीं। कितने सारे लोग पाकिस्तान से आए, आज भारत में हैं। लाखों लोग आए जिसको आप उस टाइम रिफ्यूजी का दर्जा देके लाए, रिफ्यूजी बना के लाए, उनको रीसेटल किया इस देश में, उनको फैसिलिटीज इस देश में। ऐसा नहीं किया, हम नहीं कह रहे ऐसा किया। और वो जहां से लोग वहां गए वो क्या है हम नहीं जानते उनके बारे में। भारत में अगर आप हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई वगैरह 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 करेंगे, याद रख लेना भारत में ये सब नहीं चलेगा। भारत में ये सब नहीं चलेगा जो कि आप चलाना चाहते हैं। आप किसी को भी लाइए, कहीं से भी लाइए, यहाँ किसी वजह से छोड़ दीजिए। आप तो कहते हैं कि हम हिंदू को मानते हैं, और मैं कहता हूँ हम से मानते हैं। एक कम्युनिटी को नहीं मानते, हम तो सबको मानते हैं और ऐसे ही मानेंगे। जो आपसे तोप चलानी है आप चला लीजिए। हम संविधान को मानते हैं, हम मोदी की बुक को नहीं मानते, हम मनुस्मृति को नहीं मानते, हम तो मोदी को नहीं मानते। बोलिए आप बोलेंगे तो आप कुछ नहीं, हम जानते हैं। आप तो खाली चिल्लाएंगे हम ऐसा ही करेंगे, जो कर रहे कर। ऐसे लोग बेवकूफ होते हैं। जब आप बिल ला रहे हैं, बहस कर रहे हैं, तो ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? वो लोग जिन्होंने सरकार का साथ दिया इस बिल को पास कराने में, वो खुद कंफ्यूज्ड हैं। बादल वाली पार्टी अकाली दल कह रही है अब इसमें से मुस्लिम डाल दो। क्यों भैया, आप बहस के टाइम कहाँ गए थे? आपका दिमाग नहीं था उस टाइम में? आप जो बात कर रहे हैं उसकी अब कर दो। ऐसे ही दूसरे लोग भी कह रहे हैं, स्वर ऐसे ही। वो इसलिए नहीं कह रहे कि वो चाहते हैं ऐसा हो जाए, इसलिए कि नहीं कह रहे कि मुस्लिमों को प्रेमी है वो लोग, ये बात नहीं। वो इसलिए कह रहे हैं कि पब्लिक का रुख क्या कह रहा है। पब्लिक क्या कह रही है? पब्लिक कह रही है आपका मेजॉरिटी लोकसभा में है, आपकी मेजॉरिटी राज्यसभा में है, अच्छी बात है, आपकी सरकार है, आपके मिनिस्टर्स हैं, लेकिन आपको जिन्होंने वोट दिए थे, देश की जनता ने, देश के युवा ने और दूसरे वर्गों ने, जिन्होंने आपको इस संस्थान में बिठाया, उनके बारे में तो आपने बोला नहीं। नहीं बोलना था क्या आपको? बोलना था। उनके बारे में ना बोल के आप बातें कुछ और कर रहे हैं। जी ये सिर्फ उन पे लागू होता है जो यहाँ के मुसलमान हैं, उन पे लागू नहीं होता है। क्या लागू नहीं होता उन पे? जब भारत के संविधान में आप धर्म डाल रख रहे हो, एक्ट में डाल रहे हो, एक्ट जो भारत के संविधान का एक्सटेंशन है, क्योंकि सिटीजनशिप एक्ट, सिटीजनशिप लॉ तो हमारे संविधान में भी दी हुई है, आप उसका एक्सटेंशन इस एक्ट के थ्रू कर रहे हैं। और ये एक्ट कहता है इस देश में इन लोगों के अलावा बाहर से कोई नहीं आएगा, क्योंकि ये भी अमेंडमेंट तो संविधान में ही जाने वाला है, इसलिए संविधान का हिस्सा है। लेकिन आप लोग नहीं मान रहे हैं, यही तो प्रॉब्लम है। आप सीधी तरह से मान लेते तो बात नहीं होती। आप बिल्कुल पोलाइटली जाते, भाई यहाँ से कोई भी आ सकता है जिसको हम चाहें, या जिसके हमारे जुरिडिक्शन हो, जो भी आए वहां से सबूत दे, या आया हुआ है कि इस तरह की प्रॉब्लम है और मैं वहां छोड़ना चाहता हूँ। उनको समय दिया गया था 12 साल, हमारे संविधान ने या हमारे कानून नियम ने, कि 12 साल में उनको हम नागरिकता दे पाएंगे ऐसे लोगों को जो वहां पे प्रताड़ित हैं धार्मिक रूप से। ठीक है, आप दीजिए, लेकिन नाम क्यों लिख रहे हैं किसी भी धर्म का? प्रश्न तो ये है,
क्या आवश्यकता थी आपको ये नाम लिखने की? 12 साल से आपने 5 साल किया, चलो उस बात को तो कोई भी मान लेगा, इसमें कोई बड़ा ऐशो नहीं है। बल्कि 12 साल अच्छा होता, उनकी कम से कम पता लगता कि वो किस तरह के लोग हैं। ठीक है, वो हिंदू हैं मान लेते हैं, सिख हैं मान लेते हैं, हमें उस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर एक प्रॉब्लम तो है ना, हम कैसे माने कि वो पाकिस्तान के हितैषी नहीं होंगे क्योंकि वो हमारे पास आ गए हैं? जो हमारे भी हैं, क्या वो गलत काम नहीं करते हैं कुछ लोग? तो किसी पर आप ऐसे कैसे ब्लाइंड फेथ करके, ब्लाइंड यकीन करके कि ये बहुत अच्छा है क्योंकि वो हिंदू है या सिख है या बौद्ध है इसलिए अच्छा है? सोचने की बात है। देश की जनता को आपने मिसलीड कर दिया। ये जनता जो पैदल नहीं चल सकती थी अपने यहाँ 20 पैदल जा रही है। अब पैदल चलने को आप क्या कहेंगे, दिमाग से पैदल या शरीर से पैदल? मेरे हिसाब से तो आप अगर अपना माइंड यूज करके इस एक्ट को बनाते काफी फायदा कर सकते थे देश का। लेकिन आपने जो भी थोड़ा बहुत था वो पानी में बहा दिया और धर्मों के नाम लिख दिए उसमें संविधान में। और जब धर्मों के नाम लिखे जाते हैं, किसी फेथ के नाम लिखे जाते हैं तो अच्छी बात नहीं होती है। आपने अपने मन को खुश करके पब्लिक को खुश कर दिया कि पब्लिक चाहेगी खुश होगी, लेकिन आप ये नहीं जानते कि आपके कुछ ब्राह्मणवादी लोग ही खुश होंगे, बनिए लोग खुश होंगे, और जहां तक दूसरे लोग हैं वो जो समझते हैं बात को, जो नहीं समझते उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जो समझते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, जिन्होंने अंधेरे भी देखे हैं रोशनियां भी देखी हैं, वो अच्छी तरह से समझते हैं कि इनका क्या होगा। और होने दो ना, आपको तो अपनी राजनीति चमकानी है, आपको तो ये लिखना था दिखाने के लिए हम आप सबके साथ हैं, हम उनके साथ नहीं, जिसको मुसलमान कहते हैं। खुश करना है लोगों को। मतलब कितना घटिया मटेरियल बेच रहे हैं आप देश की पब्लिक को। ये बेचना नहीं तो क्या है, इतना घटिया मटेरियल, थर्ड क्लास मटेरियल आप लोगों को कह रहे हैं। ये जो मुसलमान है भारत में, ये हमारा नहीं है, ये मतलब ये भी निकलता है क्योंकि एक नियम में वो आ गए, हिंदू सिख सलमान सब आ गए, मुस्लिम नहीं आया। आपने संविधान की शक्ति को चैलेंज किया है। अब कोर्ट क्या करेगा मैं उसमें नहीं जाना चाहता, क्योंकि आजकल कोर्ट से भी ज्यादा उम्मीद रखना अपना समय खराब करना है। देख लिया हमने कोर्ट को कि कोर्ट ने ईवीएम में क्या किया, जेएनके में क्या किया, ट्रिपल तलाक में क्या किया और किस में क्या किया, सब देख चुके हैं। तो कोर्ट से इस सरकार के होते मैं नहीं समझता कि ज्यादा आशा रखनी चाहिए, क्योंकि वो भी तो इंसान ही है, उनको भी डर है ही लोया की तरह। जस्टिस लोया के साथ क्या हुआ, कहीं उनके साथ ना हो जाए, ये डर तो है। ये कल्पना नहीं वास्तविकता है। तो वो तो उसी हिसाब से काम करेंगे और उन्होंने किया भी। राम मंदिर के केस में, बाबरी के केस में लॉजिक को फेंक के विश्वास को पकड़ लिया, बस इतना है उस केस में, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर लॉजिक लेते तो शायद फैसला कुछ और आता। और जहां तक मुसलमानों की बात है, मैं उन्हें समझा नहीं रहा, ना बता रहा हूं, मैं उनसे कोई बात भी नहीं कर रहा इस बारे में, बस इतना ही कह रहा हूं कि आप लोग भी इस देश के नागरिक हो, इस देश के मालिक हो, इसे कोई मना नहीं कर सकता। ये मोदी और ये तो टेम्पररी लोग हैं, कब होते हैं कब जाते हैं कोई नहीं जानता, इनकी कोई मालिकाना हक इनको भी नहीं है। भारत की जनता है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति इस देश की। किसी ने सच कहा, लोकसभा में आपका बहुमत है, राज्यसभा में आपका बहुमत है, राष्ट्रपति आपका है, जज भी आपका हो सकता है, हम नहीं कह सकते है कि नहीं है, लेकिन लगता है कि है। लेकिन भारत की जनता पार्लियामेंट में नहीं है, सड़क पे है। भारत की जनता का बहुमत सड़क पे है। रखिए अपनी लोकसभा अपने आप, रखिए अपने राज्यसभा अपने आप। नहीं मानते हम आपकी बात को, जो कर रहे हैं कर लीजिए।
अगर कोई युवा ऐसी बात कहता है तो मुझे खुशी होती है एक तरह से कि देखो, सोता युवा जाग रहा है। भारत का युवा जो सो रहा था कुछ हफ्ते पहले तक, एक हफ्ता, 1.5 हफ्ता, 10 दिन हो गए होंगे, वो सो रहा था, अब जागा। अरे क्या हो गया, मैं क्या हो गया, मुझे, मेरे को कौन आ गया कहने। अरे जागो तो सही, आंखें तो खोलो सोने वालों। और युवा नहीं, सब जागो, सब जागो। बहुत मच्छर काम कर रहे हैं, मक्खियां काम कर रही हैं देश में, उनको भगाना है, कहीं एपिडेमिक ना फैल जाए। उनको इलाज कर रहे हैं उनका, जाओ ढूंढो किधर हैं वो। अच्छा लगा, भारत की जनता सड़क पे है। जब भारत की जनता सड़क पे है तो लोकसभा की क्या औकात और राज्यसभा की क्या औकात। सिर्फ 550 और 250 और यहाँ 130 करोड़, कौन बड़ा है। हमने संविधान को बनाया है, भारत की जनता क्या कहना है, हमने इसको पावर दी है, हमने इसको नियमित किया है, यही हमारी सरकार है। भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। होंगे आप मेजोरिटी में, हम आपसे ज्यादा मेजोरिटी में हैं, क्योंकि आप हमसे सैलरी लेते हो, आपको हमारी बात सुननी होगी। हाँ, आप सुनने में देर कर सकते हैं क्योंकि आप कहेंगे हम बिजी थे, हम ये था, वो था। मान लेते हैं आप बिजी मत बनिए, मत बनिए बिजी, कोई फायदा नहीं आपका बिजी होने का। लेकिन हाँ, जो आपने बातें की थी अपने चुनाव में, उसका क्या। आप पाकिस्तान से आदमी लाएं, बांग्लादेश से लाएं, हमें फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, धर्म के नाम पे ना लाएं। अगर आप धर्म के नाम पे लाते हैं तो आप हमारे संविधान के खिलाफ जाते हैं और आपको जाने नहीं देंगे, संविधान के खिलाफ नहीं जाने देंगे, क्योंकि आपने संविधान की कसम खाई है अपने पोस्ट पे बैठने से पहले, और कसम पब्लिक ने खिलाई है आपको राष्ट्रपति के थ्रू। आप भारत के राष्ट्रपति हैं, भारत की तो चिंता है नहीं आपको। भारत में जॉब है नहीं है, फैक्ट्रीज काम कर रही है नहीं कर रही है, इंडस्ट्रीज काम कर रही है नहीं कर रही है, खाना सब्जी लोग के पास है कि नहीं, स्कूल कॉलेज में लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, फीस दे पा रहे हैं नहीं दे पा रहे कॉलेज की, यूनिवर्सिटीज की, उसकी आपको चिंता नहीं है। कश्मीर को क्या आपने आग लगा रखी है 4-5 महीने से, उसकी आपको चिंता नहीं है, आप बल्कि खुश हैं। देखो हिंदुओं, हमने इन मुसलमानों को 4 महीने से दबा के रखा है, यही सोच है आपकी। मतलब आप चाहते हैं एक ऐसे कम्युनिटी को हिंदू कहते हैं, वो हमारे साथ बैठी रहे और हमारा काम चलता रहेगा। एक आपका स्टैंडर्ड मेथड हो गया है, यार मेरे पास इतने हिंदू हैं, हिंदू कंसोलिडेट हो गया, मैं तो चलता रहूंगा, वोट मिलता रहेगा। मतलब वोट की राजनीति आपके दिमाग से नहीं जा रही और ना जाएगी। ये वही वोट है युवा का, आम आदमी का, जिससे आप इस पावर में आए, और उसी को पीट दो, उसी के हाथ तोड़ दो, उसी की टांग तोड़ दो, उसी को पुलिस की लाठी चलवा दो, पीट दो उसको। आपका क्या है वो, आपने तो उसको यूज करना था, यूज कर लिया, और वो बेचारा समझदार नहीं रहा, यूज हो गया। आज जब आंख खुली उस युवा की तो उसने देखा मैं तो डंडे खा रहा हूं पुलिस के, मेरे को तो बात भी नहीं करने दी जा रही, मैं तो लाइब्रेरी में पढ़ने गया था, वहां मुझे दंड लगाए जा रहे हैं, सुबह छोड़ी जा रही है, क्या क्या किया जा रहा है। इसी युवा की वोट से आए थे आप प्रधानमंत्री, और आप उसी को पीट रहे हो। कितनी अच्छी स्टोरी बन रही है, मन करता है कॉपी कर लूं, यही है ना बात। कब तक, कब तक धोखा दोगे अपने आप को। कह रहे हैं जी ये किसी पे लागू नहीं होता, भारत
के नागरिक भी, ये तो उन पे लागू होता है बस। लिख देने से बात खत्म नहीं हो जाती। आपने लिख दिया, आप सोचते हैं मान लेंगे, लेकिन उसके कनेक्शंस आप भूल जाते हैं। आप जो भी नियम बनाते हैं, अधिनियम बनाते हैं, भारत के संविधान के नीचे बनाते हैं। ये भारत का संविधान कहता है आपका कोई भी नियम, कोई भी अधिनियम, कोई भी ऑर्डिनेंस भारत के संविधान के खिलाफ नहीं जा सकता, उसके विरोध में नहीं जा सकता। वो भारत के संविधान के नीचे ही रहेगा। और जब उसको पढ़ेंगे तो पहले भारत का संविधान पढ़ेंगे, उसके बाद उस नियम को पढ़ेंगे। असली यही होता है। कोई भी केस जब आता है, सब कुछ फॉर्मेलिटी होने के बाद में, वहाँ जो लोग रह रहे होते हैं उस टाइम, अगर उनको छोड़ने दिया जाता है तो वही चलता है। वही हाल आपका हुआ। आपने भारत का संविधान तो पढ़ा नहीं, यूज जरूर से कर लिया कानून बनाने के लिए, नियम बनाने के लिए। आपने ये नहीं सोचा कि ये मैं क्या कर रहा हूं। आप या आपका मिनिस्टर कुछ भी बोलता रहे, सच्चाई तो सच्चाई है। आपने संविधान के कौन से आर्टिकल का उसमें रेफरेंस दिया कि इस आर्टिकल के नीचे ये लिखा है कि यहाँ पे आप धर्म के नाम पे लोगों को बांट दीजिए। बिल्कुल बांटना पड़ेगा आपको अगर आप ऐसी बात करेंगे तो। आपने बात को सोचा नहीं था कि लोग इस तरह से इसका रिएक्शन देंगे। आपने तो सोचा था जिस तरह से आपने ट्रिपल तलाक में गेम खेला, आपने जिस तरह से जम्मू कश्मीर में गेम खेला, वही गेम इसमें खेल लेंगे। जम्मू कश्मीर का तो लोगों को पता ही नहीं था कि हुआ क्या है। इतना तो पता था कि कानून 370 आपने हटाई है, ये लोग समझ गए थे, लेकिन ये भी नहीं मालूम था उनको कि 370 में क्या क्या है। आपने तो बताने की कोशिश भी नहीं की। आपके तो डायलॉग ये लोग होते थे, आपके आपके लोगे खेल लो उसको, अगली बार देखेंगे। होते थे कि नहीं होते आपके वाकई? लेकिन जनता अगली बार को नहीं जानती। जनता कहती है जनता को आपने समझा क्या है? हमारा युवा ठीक है, हर बात को नहीं तोड़ के समझ सकता, सोता भी रहता होगा, क्योंकि निश्चिंत है वो कि जो नेता है संभाल लेगा। लेकिन हमारा नेता तो कह रहा है कि हम तो कपड़े देख के देख लेते हैं कि वह कौन, हम तो प्यार देख के देख लेते हैं वह कौन। आपकी समझ क्यों नहीं आ रहा? भारत का युवा 1947 वाला युवा नहीं है। अगर वो सो जाता है सब भूल जाता है, लेकिन आंख खुलते ही होश आता है। फिर वो एकदम देखना आप चाहता है क्या हुआ। अब आप जामिया को बदनाम कर दीजिए, आप जेएनयू को बदनाम कर दीजिए, कर दीजिए। आप क्या जाने नाम और बदनामी क्या होती है। आपने तो हमेशा अपोजिशन में काम किया है, और अपोजिशन के लोग ऐसे ही होते हैं शायद, मेरा ख्याल है। कांग्रेस वगैरह को छोड़ दें तो भारत का युवा नहीं चाहेगा तो नहीं चाहेगा। आप चाहे डंडे मारो, उनके हड्डियां चढ़ा दो, तोड़ दो, उनको पीट दो, कुछ भी कर दो, और आप कुछ भी बोलते रहिए। आप एक बात बताइए, क्या ये लोग जो इन यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटीज में, वो क्या वहां आंदोलन करने जाते हैं? वो क्या आग लगाने जाते हैं? वो क्या वहां के शीशे तोड़ने जाते हैं? ये माना जा सकता है क्या? भारत का युवा क्या बेवकूफ है? अरे जिसने बीए, एमए, एमएससी, साइंस, इंजीनियरिंग सब कुछ पढ़ा है, वो सोचेगा उसके बारे में, या सोचेगा मैं इस कॉलेज की लाइब्रेरी का शीशा कैसे तोड़ूं, मैं इस लड़की को कैसे बाहर खींच लूं? ये सोचेगा? या जेएनयू वाला सोचेगा? आप उसको कुछ भी नाम देते रहिए, आपकी मर्जी है, टी वालों की मर्जी है। भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे या कोई भी गैंग, ये आपकी बातों से कुछ नहीं होने वाला।
युवा युवा है, स्टूडेंट स्टूडेंट है, पढ़ने जाते हैं वहाँ, और ये नहीं देखना चाहते कि ये हिंदू है, मुसलमान है या सिख है, ईसाई है, उसके लिए सारे स्टूडेंट हैं। अगर है तो सिख ईसाई बड़ी अच्छी बात है, सब ब्रदर ही तो है। लेकिन आप ये नहीं देखना पसंद करते, क्योंकि आपकी मंजिल कुछ और है। आपके माइंड में एक चीज बैठा दी गई है जो कि गलत है, बिल्कुल गलत है। आजादी पर क्या हुआ? आपको वो एक ऐसा मैसेज मिल गया है जो सर पर नहीं, इसका कोई सर नहीं, कोई पैर नहीं। जी देश हमारा धर्म के नाम पे अलग हुआ, बिल्कुल गलत मैसेज है, बिल्कुल गलत। हमारा देश धर्म के नाम पे अलग नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। अगर एक आदमी गलत हो जाए तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत हूं। अगर हमारा एक मेंबर घर का गलत हो जाए, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने सैंक्शन कर दिया अपने आप को भी वैसा। आप ये मैसेज दे के समाज में, देश के, दुनिया के एक गलत बात कर रहे हैं, गलत झूठ बोल रहे हैं आप इसलिए कहता हूं लोग झूठे हैं। आप जो नियम बना, अधिनियम बना हमारे देश की आजादी का 1947 में पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन से, उसमें मुझे दिखा दीजिए कि क्या ऑब्जेक्टिव थे उसके। उसमें कहाँ लिखा है ये सब कि ये हम फ्रीडम इनको धर्म के नाम पे दे रहे हैं? कहाँ लिखा है ये उसमें? अगर वो देश जो हमारे से अलग हुआ, हमारा हिस्सा अलग हुआ, वो एक धर्म वाला बन जाता है तो उसमें हमारा कसूर है, उसकी मर्जी। अब वो हमसे अलग हो गया है, वो रोटी खाता है या नहीं खाता है, वो क्या करता है, ये देखना हमारा तो काम नहीं है, उसकी अपनी जिम्मेदारी है। अब हमारा उससे पड़ोसी का रिश्ता है, ना कि एक परिवार का। तो हमें वो क्या सोचता है या क्या सोच के चाहता था, हमारा मतलब क्या है इस बात से? हमें आप दिखा दीजिए कहाँ लिखा है उस समय कि हमारा देश धार्मिक देश होगा। कहीं नहीं लिखा है। तो आप ये बात क्यों कहते हैं लोगों से कि उस टाइम जो बंटवारा हुआ वो धर्म के हिसाब से हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ। और हमें क्या, कौन जिम्मेदार था उसके लिए? आज उस बात का कोई फायदा नहीं। वास्तविकता ये है कि आज हम भारत हैं, जिसमें पाकिस्तान अलग हो चुका 1947 में, और उसके बाद क्या हुआ आप सब जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं। भारत भारत है। यहां धर्म पब्लिक के लिए हो सकते हैं, व्यक्ति के लिए हो सकते हैं, समाज के लिए हो सकते हैं, लेकिन परंतु देश के लिए नहीं है। हम जो कहते हैं हम भारत के लोग, वी पीपल ऑफ इंडिया, इसमें कहाँ लिखा है वी पीपल ऑफ इस्लामिक कल्चर और लेबनिज कल्चर? वेयर डू वी से दैट? हम नहीं कहते ये, हम ये कहते हैं हम भारत के लोग। तो पूर्ण निष्ठा से अपने आप को ये संविधान देते हैं, जिसके राजा होंगे सोवरेनिटी, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेटिक स्टेट एंड रिपब्लिक स्टेट। उसमें कौन से आर्टिकल में आपने हमें दिखाया ये वसंत एंड टू, वेल देख खैर, ये क्या कहता है? ये कहता है हम भारत देश हैं और रहेंगे। हम ऐसे रहेंगे भाईचारे के हिसाब से। हम एक सेकुलर राष्ट्र हैं, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र हैं, या धर्म निरपेक्ष पहले कहते थे। जहां धर्म नहीं है तो भाई आप अब क्यों लिखना चाहते हो उस नियम कानून में जो हमारा संविधान नहीं लिखता? आप या तो सीधा उसमें डाल देते कुछ और पानी भरने से पहले, ताकि हमें समझ ही नहीं आता कि हुआ क्या है।
आप चले हैं देश का निर्माण करने, विश्व गुरु बनाने, पहले सीख तो लीजिए, अपने देश का संविधान तो सीख लीजिए, किस तरह से बोलना पब्लिक में कि कपड़े देख के समझा जा सकता है। क्या ये प्रधानमंत्री की भाषा है? क्या कोई मिनिस्टर या प्रधानमंत्री ऐसा बोलना चाहिए? जवाब दीजिए पब्लिक को। आपने एक ऐसा व्हाइट वॉश कर दिया लोगों के माइंड पे कि जो इस सरकार के खिलाफ बोलेगा उसे कहा जाएगा। भारत आपके कहने से नहीं चलने वाला। जो मर्जी चिंगारी डालिए आप, पब्लिक बुझा देगी, क्योंकि पब्लिक आपसे डरने वाली नहीं है। पब्लिक ने आपको सीट तक पहुंचाया है जिसके आप काबिल नहीं थे, क्योंकि पब्लिक आपकी बातों में आ गई थी। आपकी ऐसी ऐसी बातें जो काल्पनिक थी, पब्लिक ने फिर भी मान लिया, चलो कोई बात नहीं, इनको और मौका दे दो, कोई बात नहीं, देखें तो सही क्या करते हैं। आपने बहुत अच्छा किया। आप तो ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जो सोच नहीं सकता था कोई, लेकिन वो अच्छे काम होते तो शायद अच्छा था। उनके रिजल्ट पब्लिक के लिए अच्छे आते तो शायद अच्छा था। पब्लिक एक पहले ही परेशान है और आप और परेशान करे जा रहे हैं उससे। आखिर क्यों? आप चाहते हैं अगर एक चीज की प्रॉब्लम है और दूसरा टॉपिक उसके ऊपर प्रॉब्लम में फिर लिया जाए तो पिछली प्रॉब्लम को लोग भूल जाएंगे। यह आपकी सोच हो सकती है, पब्लिक की नहीं। हाँ, पब्लिक सोती है, सोचती नहीं है, आवश्यकता नहीं समझती अपनी। इसका क्या आंसर है? पब्लिक आंसर नहीं दे सकती अपना। पब्लिक आंसर दे रही है, आपको सुनाई नहीं दे रहा है। आप देते रहिए कितने भी एक्सप्लेनेशन, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता उस बात से। आप देश के बारे में सोचेंगे तो अच्छा रहेगा। आपको चिंता है पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है। आपको चिंता यहां नहीं है कि हमारे देश में क्या हो रहा है। कुछ परसेंट लोग जो आपके साथ हैं, ब्राह्मणवादी लोग, राजपूत टाइप लोग और बनिए टाइप लोग जो आपके साथ हैं, आप समझते हो उसके सारे आप चलते रहेंगे। देश में 75-80% लोग ऐसे हैं जो आपको नहीं मानते या आपको उस समय तक मानते हैं जिस समय तक आप पावर में। उसके बाद हो सकता है आपको भी जाने दिया जाए, हो सकता है। कोई नहीं जानता क्या होगा, कोई नहीं जानता क्या होने वाला है। हाँ, इतना जानते हैं कि देश तो देश रहेगा, आप रहें या ना रहें। आपने आग लगा दी है देश में। पहले तो नोटबंदी से आग लगा दी आपने, वो दिखी नहीं आग उस समय, क्योंकि वो इतना बड़ा काम था जिसको वास्तव में होने में टाइम तो लगता। भारत को आप खेल मत समझो, एक कुश्ती का मैदान मत समझो। आप जिसके वोट से जीते हैं, आप जानते हैं कौन से वोट हैं? वो वोट हैं भारत के पंडित वर्ग के। साफ कह रहा हूं मैं, ज्यादातर जिसको आप ब्राह्मण मानते हैं, कहते हैं, वो वोट है उन पैसे वाले राजपूतों के तो ठाट बाट की जिंदगी जीते रहे। आप जीते जिन वोटों से, वो बिजनेसमैन के, बड़े बड़े पैसे वालों के वोट हैं। आपके वोट शामिल जहां नहीं है, पैसा वो है, आपके हिसाब से नहीं, जनता के हिसाब से कह रहा हूं मैं। वो वोट है उन लोगों के जिन्होंने हमेशा आपका साथ दिया, 10, 15, 20% लोग, और साथ में ये बेचारा विद्यार्थी जिसको आपने 10 करोड़ जॉब्स के 1-5 साल में सपने दिखाए, जिसको आपने सपने दिखाए कि हम विश्व गुरु बना देंगे इस देश को। विश्व गुरु तो आपने बना दिया, बहुत अच्छा विश्व गुरु बना दिया आपने इस देश को।
और इससे अच्छा विश्व गुरु क्या बनेगा? कमाल हो गई भाई, इतना अच्छा विश्व गुरु बना दिया आपने देश को। कॉलेज में घुस जाओ, यूनिवर्सिटी में घुस जाओ, बच्चों को पीटो, लाठियां चलाओ, गैस छो, लड़कियों को मारो। बहुत अच्छा किया आपने। संविधान की टांग तोड़ दो, और पुलिस तो आपके गुलाम है ही, तो आपकी बात करेगी, मेरी बात क्यों करेगी? पुलिस है, सैलरी लेती है आपसे। आप क्या समझते हो ये स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, पागल वर्ग है? आपसे तो ज्यादा पढ़ा लिखा और पढ़ रहा है। उनके दिमाग में भूत अभी सवार नहीं हुआ है, अभी खाली दिमाग होता है जिसमें विद्या डाली जा रही है, नॉलेज डाली जा रही है। आपको में तो फूस भरा हो सकता है, इनके भूस तो अभी भरा नहीं, बाद में भरेगा। अभी तो जो भक्त है सिर्फ भूस उनके दिमाग में भरा है। इनके दिमाग एजुकेशन ले रहे हैं, एकेडमिक्स ले रहे हैं अपने दिमाग में। जब एकेडमिक्स ली जाती है तो दिमाग के ओपन होते हैं सेल्स, बंद नहीं होते। आपने उनके सेल तक स्वयं ही आग लगा दी। क्या ऐसे चलता है काम? आप एक को आग लगाने के लिए दूसरे को बुझाने के लिए कहेंगे, और दूसरे को लगाने के लिए उसको बुझाने के लिए कहेंगे। आग लगाने वाले तो आप हैं। मैं बुरा नहीं कह रहा आपको, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप अच्छे कामों के लिए अच्छे नहीं है, बुरे कामों के लिए अच्छे हैं। आप क्या समझते हैं कि जो यहाँ के SC ST हैं वो हिंदू हैं? आज वो हिंदू नहीं है, हिंदू वो छोड़ चुके हैं। इसका मतलब जानते हैं? मतलब ये है कि वो 27% लोग आपकी किताब से निकल गए हैं, और जो दूसरा वर्ग है, इसको कहते हैं, इसको कहते हैं क्या? वो वर्ग जो स्वयं में रहना चाहता है। लेकिन ये लोग ग्रे में लोग थे, आपकी वजह से ग्रे में थे। इन्होंने बहुत ही प्रॉब्लम सही, और आपने और इससे पहले की सरकारों ने इनको बहुत उल्लू भी बनाया। SC ST को आप कह देते हैं कि वो हिंदू हैं, वो भी शायद हिंदू ही समझते थे अपने आप को, लेकिन हिंदू का मतलब तो ना वो समझते थे ना आप समझते हो। इसलिए मैं हिंदू पे जोर ना देके ये कहूंगा कि ये आप जैसे नहीं थे। आप जो ब्राह्मणवाद में या बनियावाद में ज्यादा विश्वास रखते हैं, या सरकारी नौकरी में या संत ज्यादा विश्वास रखते हैं। एक तो ये बात कि आप इतने ऊपर हैं, जो बंद है उसके अंदर, जिन्होंने इतना विश्वास रखा आप पे, ये लोग आज आपका विश्वास खो चुके हैं, क्योंकि वो जानते हैं आपने जो भी किया अब तक विरोधियों के लिए नहीं, आपने सरकार के लिए किया। आपको ये बात फील नहीं होती? वो लोग जो 75% नहीं कह सकते, क्योंकि OBC के बारे में मैं नहीं जानता वो क्या सोचते हैं आज की तारीख में, लेकिन ये 22% लोग, और इसके अलावा 10-15% मुस्लिम, मीन्स 30 बात के लिए, मीन्स थर्स्ट बात के लिए वो लोग समझते हैं कि आप क्या कह रहे हैं। आप उनसे काम करा लीजिए, सस्ता कर देंगे। आप जो नहीं कर सकते वो भी कर देते हैं। वो आपका सीवर भी साफ कर देते हैं, वो आपका टॉयलेट भी साफ कर देते थे, वो आपके लिए बिल्डिंग में मजदूरी भी कर लेते थे। वो चाहते थे जो आप काम कर करके दे देते थे थोड़े से पैसे के लिए, इसलिए कि वो गरीब हैं, गरीब थे। आज भी बहुत बड़े माला माल नहीं है वो, हैं कुछ लोग, कुछ होंगे, लेकिन ज्यादातर, खास तौर से ये 22% लोग SC ST में जो आते हैं, और जो 15% मुस्लिम्स तो आपके अब है ही नहीं, तो 22 और 15 37% तो वैसे ही गए, और सिख हैं कुछ दूसरे 40% लोग आज आपके साथ है नहीं। मैं नहीं जानता OBC में कितने लोग आपके साथ होंगे या नहीं होंगे, इस बारे में मेरा कोई आंसर नहीं है, पर मैं मान सकता हूँ चलो आधे इधर है आधे उधर है। तो 52% में 26% वो गए आपके हाथ से,
तो 75% लोग आपके हाथ में नहीं है। जब आधे से ज्यादा पब्लिक आपकी बात से सहमत नहीं है, तो किस बात की ध्वंस पट्टी दिखा रहे हैं आप? आप कहते हैं नहीं मानेंगे, इसका मतलब आपको कहीं प्रॉब्लम है। जब कोई कहता है मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, जो कर रहा है कर लो, इसका मतलब आपके पास उस बात का उत्तर नहीं है, आपके पास आंसर नहीं है कि क्या करना चाहिए, क्या कहना चाहिए। आपके पास वो अथॉरिटी नहीं है जिससे आप पब्लिक को कन्विंस कर सकें कि आपसे गलती हो गई है, हम सुधार रहे हैं। ये कहने में आप नहीं, आप मर जाएंगे ये नहीं कहेंगे, मुझे पता है, क्योंकि आपको अपने खिलाफ सुनने की कोई परमिशन नहीं मानते आप। मत मानिए, एक दिन तो सहना पड़ेगा, सहेंगे हम, बिल्कुल सहेंगे, लेकिन आपको भी सहना पड़ेगा। आपने ये एक्शन लिया, बेहद ही शर्मनाक था, नहीं लेना चाहिए था आपको एक्शन, आपको पब्लिक से पूछना चाहिए था, आपने नहीं पूछा। आपने कहा जिस तरह से मैं आज तक बेवकूफ बना के आया हूं, एक कागज से दे दूंगा, आपको ये टाइम दे दूंगा, कर लेना। आपने ये सोचा, आपने सोचा नहीं कि पूरे देश में आपके खिलाफ लोग सड़कों पर उतरेंगे, विद्यार्थी ही नहीं और भी उतर रहे हैं, और आप सोचते थे कि खाली मुसलमान विरोध कर रहे हैं, ये बात वो है नहीं। पहली बात तो मुस्लिम मुस्लिम करके आपने समाज को बांट दिया। होंगे ये मुस्लिम धर्म को मानने से क्या होता है, लेकिन है तो भारत के वासी, है तो इधर पैदा हुए सब के सब, इनके पूर्व कितने कितने साल से यहाँ रह रहे हैं, आजादी में हिस्सा इन्होंने लिया, तो आप उनको एकदम कंडम नहीं कर सकते। अगर आप सोचते ऐसा, आप ये नहीं कह सकते कि हम इस बात से कुछ लेना देना नहीं है भारत के लोगों से कि हम वो एमेंड कर रहे हैं। किसका एक्ट है वो सिटीजनशिप भारत का एक्ट है। वो एक्ट भारत की निर्धारित करता है सिटीजनशिप को, नागरिकता को। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो अलग से है? वो अलग से तो नहीं है, क्योंकि जो आदमी बाहर से आया या आएगा, यहाँ रहेगा, सिम लेगा, तो यहाँ का हो गया। तो फ्यूचर के होने के हिसाब से तो ये एक्ट उन पर लागू होता है, हम पे भी लागू होता है। आप कहते हैं गलत फहमी फैला रहे हो आप लोग, कांग्रेस वालों, ऐसा नहीं है। क्यों कांग्रेस में सारे पागल हैं क्या? चलो कांग्रेस को भी छोड़ दो, आप हमारी बात करो। हम तो कांग्रेस के नहीं है ना बीजेपी के हैं, हम तो पढ़ सकते हैं नियम। क्या कहता है नियम, क्या कहता है नियम? जब तक आपके ऊपर कोई अपराध ना हो, जिस दिन तक आप अपराध में ना शामिल हो, आप पे एक्शन नहीं ले सकता। आप एक सार्वजनिक मित्र हैं। बातें तो बड़ी हो सकती हैं, मैं जानता नहीं। I will not say something else. Those who can understand very well. Student is a powerful community in our country, in every country. And students are educated people. They understand. Maybe general public not going to read constitution, but certainly because they have access to that in library, they can take out a book and study what is constitution or its primal. And in many cases, they understand law or constitution more than other general public. Probably it was not early to see what happened, but when things and issues and state affairs running such high in fire and towering inferno, then we have to ensure what's happened. I was just going to that act yesterday, and I didn't find anything that is very good in that. There was no need include name of religions in that. Simply it could say, okay, those who are aggrieved or those who are having persecution, they come and we accept them. That's all. Why you're writing them Hindu, Muslim, Hindu, Sikh, Isai, Parsi, this? This means you are trying to tell intentionally to pinch that community and other communities.
This was your intention. Simply you have written, okay, we will accept them. They are persecuted people, and we will decide who has to stay or not to stay in line to this act. On further regulations we made on this act. That was adequate one. You reduce 12 years condition to 5 years. Okay, we can accept, that's not a very big deal. But 12 years is a better period, because we can have opportunity to ensure that these people do not act against interest of this country. Even though they are Hindus, they are Sikhs, Jains, after all, they have stayed in Pakistan for 72 years. Who comes in genuine status, who comes in, that is a question to understand. I can understand simply, and you can understand simply. This act is not that way as Amit Shah or Modi are telling. Had they not included these names of religions, there would have been no objection by public, because just giving facility to some people, okay? They're like, you don't come on, no problem. But why you are buying religion? Why? Because you have a plan to consolidate your votes. Our constitution preambles does not accept this. I don't know what court would do. That is court's duty. Court has to decide. But as a public court, as a court above court, institution of this country is under constitution and under public. Public thinking doesn't move as court thinks, because public has emotions, public has sentiments, and many things. Understand Bharat first. Understand first. You are in government. You have been brought to this status by those people who are now on roads, who are struggling for their rights. You promise them, but you are not even allowing them to study. You are not even allowing to study. A person who is very poor or lower middle class, he comes by merit to your institutions, and that intelligence is designed for many years. Don't you like them? These people, students, are from very common classification. They come from England as well. Those people are intelligent one. I'm not saying all, but majority of them, because they have free task to study, a moment to study. If they say now, when shall they get certificates of their performance? Government, you have to change your attitude. You comply by constitutional preambles. It's very important. You just take out names of religions from that amended act, and it will solve purpose. What Pakistan does on you, I don't care. But we have to do on ourselves. We know if people come from this country, and people came before also, during Mukti Vahini time, Bangladesh time, I think around 1 crore people came. But they must have gone. If you think, and people generally say these government people, why are linking NRC and CAA? No need of link. What is automatically linked? You are not linking that on this law, but it is automatically linked according to constitution of this country and according to solutions to this country. These are already linked. Well, I would simply say those students, please, I am thankful to you, at least you have come up on roads to speak your voice. It's a great achievement.
And it's not only to one college, Jamia in the university, it's to all those students and teachers and others who are interested in education should now seek death penalty if you are wrong, or let these people take liberty of foreigners, liberty of Ayadi. I have no answer to you because Ayadi knows anything. We people of India have to stand in name of Vande Mataram, in name of Satyemev Jyete, in name of others. But students also must take restraint that they are not honor of all institutions. Bharat, India is in such a stage currently that its resources must be utilized properly. Its students must be educated properly. We should extend them best education. We should extend them best facility so that country moves further. Even IITians are crying. Others are crying because of you. You have responsibility towards economy, responsibility towards education, towards health, towards industrialization and further industrialization, towards socialization, toward many other qualities that other leaders, other countries are having for their pride. Well, if our education system is dropping, it's because of you people. Our education was once very brilliant education, very brilliant. If you see past people and my previous generation, they were far better than us, I feel. We used to say engineers from this country are second to none. You remember Bharat Chakar came to IS. We used to say we are comparable to everyone. What do you think? What we should do? Should we not collaborate each other? You think we are dependent on government? No, government is dependent on us. And they think by force, if you push them, these students, nation solves problem? No, nation will not solve problem. भारत देश ने क्या लिया है किसी तरह? आपसे लिया क्या कुछ? काम से मांगा? आग लगाना तो इतना आसान है, इन्होंने लगा दी। बड़े बड़े स्कॉलर दिख रहे हैं, वहां से आए हैं। अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मारना बहुत आसान है, कोई भी मार लेगा, लेकिन कुल्हाड़ी गिरे और पैर पे तो बचाना बहुत मुश्किल है। दोनों हालत ऐसे हो चुके हैं, इन दोनों हाथों के हालात ऐसे हो चुके हैं, दोनों हाथों के, कि आपके साथ में क्या पकड़ेंगे आपको पता नहीं। 130 करोड़ लोगों का फैसला आप ऐसे झटके में अकेले कर लेते हैं, बहुत प्रॉब्लम है। लगता है पूरा होना चाहिए और इकोनॉमी गई भाड़ में, जम्मू कश्मीर गया भाड़ में। सोचा जम्मू कश्मीर में लोग खुश होंगे,
आतंक का दिखाएंगे अपना, लेकिन उन्होंने तो आतंक दिखाया नहीं। वो तो नॉर्मल रह रहे हैं वहाँ, लाइफ वहाँ नॉर्मल नहीं है, लेकिन उनके लिए नॉर्मल है। नहीं दिखा रहे हो अपनी अपना जो आपने सोचा था, लेकिन आपने सोचा था, आपने सोचा कुछ और था, वो कुछ और गया। ये नहीं कह रहा कि हमारे रहते हैं। आज जो हो रहा है वो एक ऐसे रास्ते में जा रहे हैं हमारा देश, अगर इसी रास्ते पे गया और हमने जाने दिया, याद रख लेना अच्छा दिन नहीं होगा वो। क्योंकि जो लोग यहाँ आ रहे हैं वहां से, वो इसलिए नहीं आ रहे कि यहाँ पहलवानी करने आ रहे हैं, इसलिए आ रहे हैं कि देश क्या चाहता है, एक रहना। देश चाहता है एक रहें, ये भी रहे। देश चाहता है हम पावरफुल बने, देश चाहता है नौकरी कमी ना हो, आसान रहे। खैर, अगर आपको देश को एक रखना है तो सरकार पे तो दबाव डालना पड़ेगा कि आप ये शब्द निकाल दीजिए उसमें से बस, और लिख दीजिए कि जो भी अंतर्गत जो भी इसका कसूर होगा, इस बात का कसूरवार होगा, उसको ये प्रॉब्लम होगी, हम ये डाल देंगे। पर आप ये बात समझ नहीं रहे हैं, आपके मन में वो पाकिस्तानी आ गए हैं जो कहते हैं, आप उस बात को नहीं समझ रहे। समझ रहे हो तो ऐसी बात नहीं करते। ना आप देश की इकोनॉमी को समझ रहे हैं, ना आप यहाँ की वो समझ रहे हैं। सोचना पड़ता है कई बार, आखिर विषय ऐसा है, क्यों जा रहे हैं हम उस गर्त में जहां नहीं जाना चाहिए? आखिर क्या है वहां? Why we are marching to darkness? I have some, I had some small watch. Here, I would simply say to these people, youth, and particularly to those people who are not coming out of their homes, those intellectuals, engineers, doctors, professors, and all those higher, lower profile people, don't think that you are safe. Those people who are intellectuals, who are in professions, who understand law like advocates, etc., think around. Even though, sure, that is lesson. One time we were great. Education was very high level. Professionals were too high qualified. And then we were devised in my career by many careers to India. I had a wrong career.
देश को बर्बादी की तरफ ले जाना तो बहुत आसान है, ले जा रहे हैं, हम जा रहे हैं बर्बादी की तरफ। ये चाहते हैं एक ऐसा राष्ट्र बनाना जिसे हिंदू राष्ट्र कहा जाए, जबकि हिंदू राष्ट्र का मतलब ही जानते भी नहीं है। ये समझते हैं बस इस संविधान को खत्म कर दो या इसका एक पेज बदल दो, दूसरा पेज लगा दो, इंटरेस्ट बन गया, यस बन जाएगा, बन जाइए आप, आइए आप हिंदू राष्ट्र। जितना मर्जी जोर लगा लो राजनीति वालों, जितना मर्जी जोर लगा लो, जनता बेवकूफ नहीं बनेगी, कभी कभी बन जाती है। आज आपके जो भक्त हैं पता नहीं क्या क्या लिखते रहते हैं, ऐसे समझाने की कोशिश करते हैं पब्लिक को कि पब्लिक पागल है, पागल है, अरे कुछ नहीं होगा, ये आपके लिए है ही नहीं, ये क्या कि क्या मान लेंगे बात को। ऐसी बातें तो बहुत जगह की जाती हैं। ये बात मैं आहिस्ता आहिस्ता कुछ कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। ये इतना सिंपल मामला नहीं है, जैसे जम्मू कश्मीर का मामला सिंपल नहीं है, ये उससे भी ज्यादा कठिन है। देखो जम्मू कश्मीर अभी तक लटका हुआ है, कहने को आप सब खुश हुए कि अच्छा हुआ 370 हटा दिए, लेकिन आपको पता ही नहीं था क्या हुआ, नहीं पता था आपको। पता होता तो ऐसी बात नहीं होती, अभी तक सब कुछ फ्री हो गया होता, वहां पब्लिक घूम रही होती, सब कुछ होता, आना जाना होता, सब होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा क्यों नहीं हुआ, उसका कारण है, रीजन। अगर 370 इतना आसान होता तो बात क्या थी। हमारे कानून से हम बंधे होते हैं, हमारे कानून से बस इसी वजह से। बंधे हैं हम, कब से संविधान से बंधे हैं, किसी की ताकत नहीं कि हमारी पब्लिक को संविधान से बाहर कर दे। संविधान संविधान है, भारत के उन लोगों द्वारा लिखा गया जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपना खून पसीना बहा, अपना सब कुछ बहा। इन्होंने क्या बहा। आज जो बात कर रहे हैं देशभक्ति की, जो कह रहे हैं हम जो कर रहे हैं वो ठीक करें, जो पहले हुआ है सब गलत हुआ है। आपको तो समझ भी नहीं है आजादी क्या होती है, पकी पकाई खाने वालों, क्या होती है आजादी। ये जो आदमी जेल से छूटने के लिए कई कई बार माफिया लेके आया, उसको भारत नाम देना चाहते हैं। तो बात यही है, उसे बात करना चाहते हैं। दंगा कराना बड़ा आसान है, करा दो। कानून बनाना बड़ा आसान है, जबरदस्ती करा दो। आपकी मेजोरिटी है लोकसभा में भी, राज्यसभा भी आप बना लेते हैं मेजोरिटी और कानून पास करा लेते हैं। पर मानना किसने है, कानून पास कराने से सब कुछ नहीं होता। उस कानून को, उस नियम को मानना भी चाहिए पब्लिक द्वारा। और यदि पब्लिक ना चाहे उसको मानना, तो कौन सा आपके पास इरादा है, सॉल्यूशन है। आप बताइए, 370 370 आखिर उसमें हुआ क्या है। आप कहते हैं जी 70 साल से एक समस्या थी, आप किसी से पूछिए,
बहुत अच्छा हुआ जी, वो तो इन्होंने बहुत अच्छा कर दिया, वो एक समस्या भी खत्म कर दी। अच्छा, समस्या खत्म कर दी, क्या खत्म कर दिया? आप गए कश्मीर, उसके बाद गए उधर जम्मू, आपने देखा है जाके क्या हुआ, किस तरह से लोग रिएक्ट कर रहे हैं? किसने कोशिश की, या बस मोदी ने कह दिया हो गया? मोदी तो कहेगा, उसका तो काम है कहना कि समस्या थी, हमने खत्म कर दी। 4 महीने हो चुके हैं, 5वां लगा हुआ है। आज कितनी तारीख है? 19। 4.5 महीने हो चुके हैं, 135 दिन। अभी तक समस्या और बढ़ गई है, कम नहीं हुई है। आप सोचिए, आपको अगर घर से बाहर ना निकलने दिया जाए, आपको दबा के रखा जाए, आपके बच्चों को पकड़ लिया जाए, आप वहां कितने दिन रह पाएंगे? कितने दिन रह पाएंगे आप ऐसे? अगर आप उनको अभी तक फ्री नहीं कर पाए, मैं किसी नेता की बात नहीं कर रहा, मैं बात उनकी कर रहा हूं जो वास्तविकता है। अगर आपने 370 का इतिहास जाना होता, थोड़ा सा भी, तो शायद ये नौबत नहीं आती। 1 करोड़ लोग जो जम्मू कश्मीर के हैं, आप क्या समझते हैं वो आपके साथ है आज की तारीख में? कभी नहीं। लेकिन उनके अंदर एक शक्ति जरूर आ चुकी है, एक शक्ति तो आ चुकी है उनमें, और वो ये आ चुकी है जिसको कहते हैं एक लैंग्वेज में गंदी भाषा, भाड़ में जाओ। मानते हैं उसका मतलब? जो आपने करना था कर लिया, भाड़ में जाओ। आप इसको स्टेट बनाओ मत बनाओ, यूनियन टेरिटरी मत बनाओ, 370 हटाओ मत हटाओ, यू गेट लॉस्ट फ्रॉम देयर। नहीं मानते हम आपको? ठीक है, हम खाना नहीं खाएंगे, हम ऐसे ही अंदर रहेंगे, हमारा 18,000 करोड़ का नुकसान हो चुका हो जाए, हम मरने को तैयार हैं, पर हम आपके सामने नहीं झुकेंगे। इस तरह की सोच जब पब्लिक में आ जाती है, तो समझ लीजिए, हिटलर का बाप भी क्यों ना हो, और उसका भी बाप क्यों ना हो, हारेगा। कोई हल नहीं है। आज हमारे देश का वही हाल है। हमने जम्मू कश्मीर को खत्म कर दिया। ठीक है, आप खत्म कर दीजिए, कर दिया, माइंड से नहीं कर दिया, शरीरों से ना किया हो, जगह से ना किया हो, लेकिन जम्मू कश्मीर की पब्लिक, अगर उनको पूरी आज उम्मीद हो जाए, पूरी उनकी कामना बाहर आ जाए, क्या कर लेंगे आप? ये बात अगर नेता सोचते और पब्लिक सोचती, ऐसा उन्होंने क्यों किया? मैं बताता हूं क्यों किया। जो कश्मीर जम्मू हमारे साथ आया था 1947 में, अपनी इच्छा से आया था, हमने उसको लड़ाई करके नहीं जीता था, अपनी इच्छा से आया था। पाकिस्तान भी जा सकता था, हम कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन उसने हम पे विश्वास किया था। हमारे समाज में जो कल्चर है ऐसा ही है जैसे अभी है, वो ये नहीं कह सकता कि उसका कल्चर छोटा है।
जितने कानून अगर आप देखेंगे जम्मू कश्मीर के, सब के सब हमारे खिलाफ जाते हैं। एनालाइज करके देख लीजिए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन देख लीजिए, उसके बाद ये जो 370 आया संविधान में, उसको आपने हटा दिया। इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन संविधान में आया 370 के नाम से, उसको हमने हटा दिया। फिर वो गया JNK कॉन्स्टिट्यूशन के नाम में 1956 में, और उससे पहले 1952 में दिल्ली एग्रीमेंट के नाम से वो आपने हटा दिया। यूएनओ में गया था केस रेफरेंडम के नाम पे, रेफरेंडम अभी तक हुआ नहीं, क्योंकि बीच में शिमला एग्रीमेंट आ गया। शिमला एग्रीमेंट कब आया? 1972 में आया, याद है? आप शायद पैदा भी कुछ नहीं होंगे उस 9 से। 1972 में शिमला एग्रीमेंट आया, जिसने कहा हम दोनों अपनी प्रॉब्लम को खुद बैठ के बात करके सॉल्व करेंगे। बहुत अच्छी बात थी। इंदिरा गांधी भुट्टो का एग्रीमेंट था, यूएन में रजिस्टर्ड है, उसको भी आपने हटा दिया। वो कैसे? उसमें कहा दोनों बैठ के बात करेंगे, कहा था कि नहीं करता? आपने अपने आप फैसला ले लिया, क्योंकि आपने कहा कि हमारा अपना मामला है, आपका अपना मामला है। माना, उसका नहीं है भी मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। फिर यूएनओ में क्या हुआ था? वहां क्यों गए थे आप? उस टाइम नहीं था कि हमारा मामला अपना, चलो मान लेते हैं, आपका नहीं था अपना, उसका था। लेकिन रिजोल्यूशन तो है, वो आज भी है। क्या वो एनल हो गया? आपने अप्लाई किया यूएनओ में, इसको एनल कर दो, आपने तो नहीं किया। इसका मतलब रिजोल्यूशन आज भी है। ये आपकी बात बुद्धि में क्यों नहीं आती? शिमला एग्रीमेंट, बैठ के बात करेंगे। जो जगह पाकिस्तान के पास है कश्मीर की, वो किसकी है? आपका दावा है कि आपकी है। तो बात बैठ के करेंगे। कब करेंगे? जिस पे आपका कब्जा है, वो आपका इंस्ट्रूमेंट फेंक दिया आपने, कश्मीर का उसका संविधान भी फेंक दिया आपने, और आपके संविधान में कुछ और लिखा है। कभी पढ़ा आपने? आपके संविधान में लिखा है कि जो हमारे कब्जे में है वो हमारा है। आपके कब्जे में कौन सा था? आपके कब्जे में हमारा वाला था, उसका नहीं था, क्योंकि ये संविधान में ऐसा लिखा है कि जो 1947 15 अगस्त को था वो हमारा है। मतलब पाकिस्तान वाला आपका नहीं है, तो आपके संविधान के हिसाब से वो आपका नहीं है। फिर आप किस बात का दावा ठोकेंगे? एक सोचने की बात है, इंटेलिजेंस लगाने की बात है। सोचना चाहिए। जब तक आप एक एक पॉइंट को नहीं सोचेंगे, आपकी हंसी उड़ती रहेगी दुनिया में। पागलों का देश है, बेवकूफों का देश है नहीं ये है, ये नहीं है, अनपढ़ गंवारों का देश है। छोड़ो, ये बात गधा भी समझेगा। जो कागज आपके थे आपने फेंक दिए। Hell with instrument annexation, and hell with Constitution of Jammu and Kashmir, and hell with UN resolution, hell with everything. I am everything. Do you work like that? Everybody of JNK knows it. Legally, you are out. Yes, that is truth. You are out legally. By force, you are there. And that is why they are silent. They are silent. And a person who is silenced is always very dangerous. You ignored
instrument of accession of JNK to India, Bharat. You ignored JNK Constitution 1956. You ignored Delhi Agreement 1952. You ignored Article 317 COI. You ignored UN Resolution 1948 to very many even, and you ignored Simla Agreement. This means you ignored JNK, and that's what they are saying. Go back, India, they are saying. What answer you have? You are so fearful, still 900,000 armed forces are there. This is clear indication that you are not having resolution on this. You are just misleading people, not even a single file you got it. Just self-praise, only self-praise, thumping my back myself. This is called stupid act. Self-praise is no recommendation, it's a phrase, Self-praise is no recommendation, is a set phrase in English. अपनी तारीफ स्वयं नहीं की जाती, करने वाले को मूर्ख कहा जाता है. हम मूर्ख मंडली हैं. भारत देश के नेता मूर्ख मंडल हैं, और वो जितनी पब्लिक है कुछ समय के लिए उनको भी मूर्ख बना देते हैं. और हम सीधे साधे लोग ज्यादा इन चक्करों में जाते नहीं, क्योंकि हमको दस्तावेज पढ़ने की आदत नहीं. वी नेवर स्टडी डॉक्यूमेंट्स, वी नेवर एनालाइज डॉक्यूमेंट्स, वी नेवर remove skin from heel. We never do that. And unfortunately, my intellectuals in this country are intellectuals only for name's sake, only for degrees, certificates. My certificate, PhD, MSc, this and that. Not more than that. This is locked. Religion. Every religion in the world locks this portion. If it doesn't lock this portion, you can't believe them. राम के बारे में मत बोलना. राम थे, रावण था. Why don't you ask for evidence? No evidence, I believe. Okay, you believe. Can't you use this? Shut up. When I say. Your congressman, they're speaking as Ram. Congress affidavits in court. There is no historical proof. There is no historical record. And these people say, he says there was no Ram. What is this? You show me proof. I am asking you. I am not Congress. Show me proof of Ram. Show me. Do you have? No. I believe. You are believing. Believe it. I don't stop that. But I am asking for evidence. No evidence. Do you believe your grandfather was there? Yes, I have so many generations. Okay. Show me proof of your fifth generation from your upwards. First, second, third, fourth, grandfather. Can you show me where he was born? What is the date of birth? Where is birth certificate? Can you bring that? How can I bring that? You cannot bring that. You're asking me for my citizenship date of birth. I was here for 500 years. Can you bring that? My question is, why this foolishness? Who says Ram was there? Krishna was there. Harishchandra was there. Shiva, Vishnu, Brahma are there everywhere. But we don't have evidence. But our courts work on evidence. Why you blame Congress? This is a requirement. In NRC, you are asking every record. From where? Bharat was one time. Whole world was Bharat. Whole world was Bharat. Bharat was America. Bharat was England. Bharat was Canada. Everywhere, Bharat ruled, Dharma ruled.
It was hundreds and thousands years back. That's also a fact. You accept or don't accept. But we don't have evidence. Why American people believe in Kali? They believe in that. They believe in a different mode. This means there is some historical track. That's the belief. Then you can swastika, they believe indirectly, in negatively. Hitler is used to be a swastika. America says it's omen sign. We say it's a prosperous sign. It's a Shobnishan, auspicious sign. Say or not? Swastika. This is swastika. See this one here. You can sign swastika here. In this, you'll find this is swastika. You know this. This is swastika here. America says this is omen. There's a building of swastika shape, and they covered it so that people should not see it from top. And Israel, what is that? You love Israel too much, I know. Israel, you love it. You see on top of this diagram, which was that? This is double triangle. You can see that on top one of top side of this pentagon. That is that symbol, double triangle. They call it Mark of David. In their culture, they call it Mark of David. This is Mata's Devi's Shakti sign in our country. It clearly indicates people were everywhere available with interconnectivity of minds and faiths. That is, I say, it was everywhere Bharat and Dharma. Go to Italy, you will find Jyete. Go to Mexico, you will find something which is same as Kali. You say America, it's there, agreed on. They put on wall, they towers, electronic way, Kalka. You go to many other countries, you will find something in Egypt, something in somewhere. So it means Bharat was everywhere. When Krishna said in Mahabharata, Yada yada hi dharmasya galanirvavati Bharat, said or no? Yada yada hi dharmasya galanirvavati Bharat, abe uthanam adharmasya tadhatmanam srijamyaham. Paritrnaya sadhunam vinashaya duskritam dharma sansthapanarthaya sambhavami yuga yuge. What does it mean? Do you know that? You know that. I know you don't remember because it's a little difficult. Means yada yada hi dharmasya galanirvavati Bharat. Wherever there is a harm to dharma, there is a damage to dharma, there is a dissolution of dharma in Bharat. Whenever it is in Bharat, shall Krishna or Ram come to this Bharat only thing? No. Earth is Bharat for them. Bharat means earth. They shall come to earth. He shall come to earth. God shall come to earth to set it right, to remove darkness from here, to remove sins from here, to remove evils from here, and punish those sinners, those criminals, and help those good people who are called sadhuism or scientists and engineers who work in interest of humanity, help them and to re-establish dharma, institutional dharma on earth. And whenever it happens, I'll be here in every age, every time it's required, I'll be here. That's what Ram said, and that's what Krishna said. But we think they said only for this portion of Bharat, which is now. No. If Ram is there as God, Ram is for whole world. If Krishna is there for God, is for whole world. And Satyavadi Harishchandra was truth for whole world. This is fact of life. It is not Hinduism. It is humanism. Remember, there's a difference. Hinduism versus humanism. Hinduism is a fiction. It's a miscreation. But humanism is origin. Top faith is humanism, rightism, truism. That has to be understood. These RSS people,
Only lying. This BJP only lying. There is no Hinduism. Show me any book that says Hinduism is a religion. It's just a fiction. Mislead. Humanity is a religion. Dharma. Right. Right is right, wrong is wrong. That's religion. If you kill someone, it's sin. If you help someone, it's good. It's it. You yourself appointed gods. You yourself named your religions. Nobody named it. When you came from God, did you bring some certificate? Oh, I am Hindu, I am Muslim. No. You adopted yourself. So you adopted. Just like your father named me and you, same you adopted. Your father gave you something, you adopted, but that is also imaginary. My name is this. That's only reference, nothing else. We have to take this way. Everybody on this world has a right to live, to enjoy resources given by God. To earth, right, is owned by everybody. Why don't we understand this? This is no gruesome. This is no preaching. This is fact. Sun is giving light to all. Rain gives water to all. Here you are taking same air which I am taking. No difference, no partition there. Even animals are taking same air. Where is difference? Difference in politics. Difference in people who make religion their business. Pandits, Maulvis, bishops, all these are business people. They make money out of this work, which is actually no work. What work they are doing? What work your Pandit is doing? Tell me. Just misleading only. Oh, you have this star's impact. Take this nariyal and go to put on that traya on this crossroad. Do this and do so many mantras. He will never say work hard because he himself is not working hard. This Pandit or Tantric always do this, you'll get benefit of that. Jupiter is 76 crore kilometers from here. That shall impact upon you. You think so? What is this? This is my stone. This is my luck. I have to use this hard disk and this software for my work, for my future. If everybody thinks on stars and religion, this world cannot move. Which religion God is having? Have you ever thought of? Which religion Shiva is following, Allah is following, Krishna is, which religion they are following? No religion. But we are following because we are more brilliant than those people, those powers. We are more brilliant. We know more than they know. They constructed whole universe. They constructed solar system. We never ever think. We want to go to sun. Scientists want to go to sun, but they don't know what sun is, how it works, how my earth is working. Do you know that? Do you know you are in two velocities? You are all time moving in two speed. One you are moving on earth speed, which is moving on its own axle, which is 1600 kilometers an hour per hour. Do you know that? You never know that because you never calculated. But God did it for you. Don't worry. And do you know with what speed your earth is moving around sun? You know that? It's more than 1,00,000 kilometers per hour. Means with 1,00,000 kilometers per hour you will move around sun. God did it for you. You never even can imagine. Can you imagine this is speed by your bus or car, by your bullet train, or even by your space rocket? NASA cannot do this. Science says if you reach sun, you have to have 2.25 million kilometers per hour speed to face sun. You know that. I put all this on my videos before. Maybe you did not see that. If you are at sun, and if you are safe there, otherwise sun will capture you. Rakshas. It will capture you if you move less than 2.25 million kilometers per hour. Can you make such racket?
Can you say it's a missile? Never. But this is fact of life. You can't even think what God has done for you. And you are appointing God. You are appointing his theory as if you know that. That's what I'm saying. Use mind. God is biggest doctor, biggest scientist. All doctors of this world, I am neurologist, I am this specialist, I am that specialist. Did you find some doctor in your life who says, I am expert of a whole human body and soul? Did you find any person in life? I challenge anybody there in life. Everybody is cardio specialist, I am mind specialist, I am heart specialist, I am ONT, ENT, and that. Can some doctor explain how your brain works? No one can explain to you. They can explain only what book says, not more than that. I'm not blaming someone here. Facts are these. Have you seen sometime how a building works, how a building serves you? You never saw that. But it is. Building is a service. It's a service system. It's serving you. It's working because it's natural material assembled into physical entity. Steel is there, concrete is there, cement is there, water is there. Many stresses are working in that. You don't know. Engineers know. Because it's also a living entity for engineering, but there are so many forces working in a building. When train moves, how it moves, do you know? When air is moving, how it's moving, do you know? What is space, do you know? How it's working in space? How these planets are stationary, so big, but stationary, not falling. Your building can fall. You can fall, but these Earth, planet, Sun, Moon, all these are so big. Jupiter is so big. Sun is so big. 1.3, you can say 1.3 million kilometer diameter size Sun is 1.3 million kilometer. There are lakh. It's moving. It's there stationary. It's not falling onto you. Have you ever thought of how these are working? You cannot think of. You drive a cycle, you fall. You drive a motorcycle and fall. But these are not falling. Do you understand what I'm explaining? So don't prove that God is there because you cannot prove. Works are there. They are speaking God is there. Sun is there, which is a result of God's work and which is giving you life on this planet. Similarly, all are there. Nature is there. Rain is there. Clouds are there. Sky is there. Stars are there. All these stars are different solar systems. Who knows? I can't prove that. All these stars, trillions and trillions of stars, they're all varying solar systems like our solar system. And where is it? Then why we are talking Hindu, Muslim, say, Isai, this and that? They're all God's products. We are still in nonsense attitude that this is our. I am right and you are. I am Hindu. You are Muslim. You are Pakistani. I am this. This is what germical bacterial attitude. No thinking power. You don't know what mind is. Believe me, it's very small but very big. You connect it with God and see. He'll tell you what you are. Connect it to God. Can you? They call yogic. I am yoga. Bloody hell doesn't understand what yoga is. These yoga gurus are cheats. They don't understand anything of yoga, but they are gurus. Oh, I am doing yoga. Hell with them. They don't know any yoga. Connect yourself to God. That is yoga link. Yoga means some link. Join. We call it 5 and 4 yoga. Yoga is this. We call it Hindi yoga. This is yoga. Connect yourself to God. Then you get God. Finish. That's yoga.
When you come in God, you get energy from God. You get answers from God. That is yoga. It's not yoga for this year. There is a physical exercise. In your school, college, you learn physical exercises. This is that. I'm explaining to you because this is science, this is knowledge. Knowledge is knowledge until we don't know what is system behind that knowledge. But when you know that system, it's called science. Computer is already here. We generate computer. Gravity is already there. Scientists generate what we know what gravity is for us. Everything is existing because God is biggest scientist, biggest engineer, biggest doctor, biggest every profession, and biggest politician also. But these politicians who we have all over the world are crooks, robbers. Go to every country, you'll find same. Everywhere someone is punished. Go to Malaysia, go to Thailand, go to China, in our country, go to USA. Everywhere someone is being punished. Malta, Indonesia, you can say Yemen, you can say Algeria, wherever you go, everywhere some crime and criminals are available. In our country, same thing. Because we are all very small. Money, everybody wants money. Money. Lakshmi. Everybody wants Lakshmi without work. Loot, rape. But you forget you are living this world after some time. Everybody has to leave this world without money. But you keep it there. Yes, you want to store money for nothing. Store money. This is your country, this is my country, this is you or this is mine. Keep on saying. This is called befooling whole public. And public receive such ideas very brilliantly, which are of no use. My money was there with government when this government came. Where's my money? What I am paying to government in form of taxes, where's that money going? What government promises, why they are not fulfilling, why should I not ask this question? I am only interested in debate of Hindu-Muslim all day. On TV you see Hindu-Muslim, Pakistan, this and that. Is that my food? Shall it fill my stomach? But they are doing this drama all day. All day they do this drama. And this Prime Minister, all the talks, so many things. हमारा ये होगा, वो हो जाएगा, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे. सब सपना बेचना. Selling dreams only to those people who believe in dreams. You are in dream and Prime Minister is in dream. Both are talking to each other and enjoying having sound sleep of dream. You want this type of nation? Or you want dynamic and nation that has power and wealth? You have to create wealth. You are not creating wealth. You are just creating talks. You are buying talks. He is selling talks. Last time he sold him tea, chai pe charcha. This time sold Vishwas pe charcha. And next time he will sell yourself. Get lost from here. I am selling railway. I am selling my companies, 48 companies. I am selling this. I am selling that. And one day he will sell you also. Do you understand this? If you cannot understand this, no one can sensitize you. It's your future, but I am happy that students are rising gradually. That is a good news. That sleeping community of students are coming up and their parents are also coming up. That's something we are missing on national scene because we are missing economical development, we are missing educational development, we are missing health development, we are missing public development. This is happening. Some people are happy. I am again telling you, 15 to 20% population is very happy with this government. I am not an enemy of this government because in 2014 I voted to Modi because I also thought he may do miracles. But
Miracle has done him. He has not done miracle. Miracles have done that. Miracle has brought him to this power. And public supported it, fine, but results are zero, negative. Taking money from RBI and eating, taking money from taxes and eating, taking money from here and all money dispersed. Nobody knows where it's gone. It's still banks are bankrupt. Where is that money gone? Is it not a question to be raised? Who is raising? No one. Opposition is sleeping, Congress is sleeping, CPM is sleeping, all are sleeping, BJP is happy. Stupid BJP people, fools, rapists, murderers. 233 people, 233 MPs in Lok Sabha are criminals. And we are celebrating criminals. Oh, Lok Sabha, majority, we have majority of 303 people. You have majority of criminals, not MPs. I don't understand mind of our public. They can elect MPs who are criminals. What a great mind, what great voters we have. Thank you, voters, for electing criminals in Lok Sabha. You have done too much. You have brought nation to world prides. 43% people in their house are criminals. What else you want? Means you trust criminals also. Criminals are worshipping. Criminals are going to temples. Criminals are going to mosques. Everywhere criminals are going. And we are happy. We have 230 people, Lok Sabha criminals. MPs, rapists, murderers, robbers, all. And our bank robbers are in London or in there and there and there. They are enjoying their lives. And we are weeping. We don't have employment. What to do? We don't have food to eat. What to do? Our farmers are committing suicide. What to do? Who shall answer you? You have to answer yourself. Use your work. It is your karma. You opted for this and you got it. You did not think you were acting criminals that time. When you voted to Modi. You did not vote to MP. That is your crime. You are also criminal. You knew that you want future, but you are electing criminal. Bhopal people elected someone. Those people are worshipping Godse, and Godse worshippers you trust. Those people who signed apologies to British for release from jail, you are worshipping them. Worship. You are giving Bharat, give Bharat Ratan. Then why do you expect justice from judiciary, work from executive, and good legislatures from parliament? Why do you expect good police action? Why do you expect that? You yourself you have proved you don't need all those. You want an imaginary government, a fictitious system, a system that is not meant for you, just like a film you're watching. Oh, everything's happening in film. I enjoy for 3 hours. Very good film, very dynamic film. What a film, what a director. After that, film is off. The end. Go. Our government is a film. Our legislature is a film. Executive is a film. And judiciary is also a film. And president is director of all those. And Modi is super director. This is our called Bharat. So called proposed Hindu Rashtra. This is Hindu Rashtra. Do you know Hindu Rashtra? Fictitious Rashtra. A fictitious fiction. Hindu just like a fiction it is. That's a fiction. You talk any guru and ask him some question. How did it happen? Define, justify this. He shall never justify you. He shall never answer you. He will just narrate you a story. There was a king. He did that, this, that, and this is why it happened. He will never tell you logical answer. You are living in a dream world. Public has to be answered about economic development, about jobs. So there is an answer. Pakistan has a problem. They are torturing our Hindus, Sikhs, and others. We want to take back. This is the only way. We are only a nation where Hindus reside. This is the answer.
Don't ask for economy, ask for that migration. Those are expected to come, they are under torture, we want to help them. And we will torture SC and ST here. Then where shall they go? Mob lynching, Dalits killing. You cannot go for marriage on your horse or mare, and you cannot wear shoes, and you cannot do anything which we don't expect because you're SC/ST. They are Hindus or they are Muslims or who are they? They are Sikhs. What are they? SC/ST don't accept they are Hindus. They say we are not Hindus. We don't accept ourselves Hindus. But this what sort of politics, what sort of management is going on in this country? It's out of common man's understanding. Just keep your brains vast and vote is my property. You want to live in this dream world? Live on. Go on living in this dream world and let Modi be Prime Minister forever because you deserve such treatment. Don't ask for food. Don't ask for job. Don't ask for education. Don't ask for IIT. Don't ask for this. If you want to do study, spend money. And study, just like you spend money to take your food. Education is not free. Degrees are not free. Why do you want me to give you free? You are giving me tax. So what? You have to, if you want to live in this country, or get out of this country if you don't look at it. Really beautiful or no? It's beautiful, very beautiful. What an arrangement is this? You are living in a world which is a fictitious world. You have to change it, and I am thankful to students who have started this mechanical activity of talking, speaking, and raising voice, even at cost of violence on them caused by police. They are accepting lathi charge, they are accepting beating, they are accepting everything, and they are sacrificing, and sacrifices never go waste. This government needs such answer. And you have also to answer that forget bhakti, forget bhaks, they are mentally lost people, they are psycho people. These Modi bhaks are all psychic. They cannot think at young age, unfortunately. They are in age of 20, 25, 30, and they have lost their thinking power. That means bhakti. It could be Congress bhakti also, same thing. No thinking power. When you lose thinking power, you are away from God. When you think you are with God, because God seeks you should be thoughtful person. You should be analytical person. When you are analytical, when you are thoughtful, I am with you. You work, I'll help you. But if you don't think that you're animal, no difference between buffalo and you, what's the difference? A ox or buffalo, no difference. You are same, only body is different. So you have to decide yourself. You want to be bhakt or you want to be a thinker. That's why I always say think tank. You have to think you respect your constitution or you respect your Hindu Rashtra. You have to think that you want to fight in name of religion or you want to fight in name of your work, in name of employment, in name of education. And until people are educated, they will be treated like British treated us. They never allowed us education. They are also stopping you from education because they don't want you to study. They don't want you to go further. They will buy people from other countries. They have that capacity. Why you want? When they can grant some prestigious certification to something that doesn't exist, now what's the value? They will give you certificates, no problem. You got certificates. You buy. Why do you go to college? For what? Have a PM doesn't have certificate. No one has certificate. Why you need certificate? I don't know. He is PM without certificate. You can be PM without certificate. You can be engineer without certificate. Just a focus certificate. You can be doctor without certificate. In the Hindu Rashtra, you can have all that. Hindu Rashtra is a fictitious management, fictitious government, illogical system, non-scientific system, only commercial system. Pay, get. You want certificate? Give me 1 crore, I'll give certificate. 50 lakhs, I'll give certificate. This is Hindu Rashtra.
You want Hindu Rashtra? Welcome. Welcome to Hindu Rashtra located in South Asia or east of here. You find everything. You can get that. Hell with this thinking. You think it's a good thinking? You welcome, you welcome. I am not understanding 140 crore people what actually they want. They don't want anything. They are all fools. They vote one man. Unfortunately, I love Modi. Why do you vote PM position? Vote your MP position. You have been successful to send 233 criminals to your Lok Sabha. You are happy with that. Really foolish person, foolish people. They are sending criminals to Lok Sabha and happy. What else foolishness is? I can't understand. This is foolishness. This is a stupid attitude. We are killing ourselves. We are breaking our legs. We are cutting our bodies by doing such abusive voting. Voting has been made a fun. It's not seriousness. Modi says, Utsav hai. A person who is prime minister of this country, he says voting is utsav, a festival. What festival? I don't understand what you're celebrating for. You are going to decide for your future. You should be serious rather than you are getting, oh, it's utsav, celebrate it. You celebrate it, or you have to see how shall I move my family. To whom should I elect so that my nation moves? It's a serious question or it's a dancing question? I can't understand. After polls are over, why people celebrate, I also don't know. They just celebrate because someone won, someone victorious, became victorious, they are happy. But what did you get? Has it delivered something to you? Has it solved your problem? Has you got some better nation? Or you are celebrating Modi won, this man won. What has Modi delivered to you? And what Congress did for you? Do you know that? Have you ever analyzed that? They are corrupt, they are corrupt, they are corrupt. That's all. And he is Satyavadi, Satyavadi, Satyavadi. That's all. Is he? Did you ever study on this? Did you ever make a review on that? A research on that? You never did. Because you are living in fool's paradise. You are living in a dream. And you shall for whole your life live in a dream. You don't want to meet your national requirement, your personal requirement. You don't think that this is your country. That's why you are electing stupids. It may be Congress, it may be BJP, no difference at all. You don't know whom you should elect, can be your representative. Those representatives who voted for CAAB now say, oh no, Muslims should be there. Bharat, this Akali says. Other one also says, oh, this man, I think, what do you call it? Orissa chief. Oh, I don't accept NRC. Oh, bloody hell, you have done something already wrong. Why you're now repenting on that? Because he knows people are out. People are on road. My vote bank shall go. They are worried about their vote banks. They are not worried about CA or NRC. No, they are not at all worried. Oh, my voters have gone. Student community has gone out of my hand. Students shall not vote for me. So my 25% votes have gone. He is worried about that. They are counting votes. They are not counting your welfare. You want to support them or you want to kick them out. You have to decide. Such leaders, such representatives should be kicked out who do not have understanding, and after voting something, they say, oh no, this should be like that. You were sleeping in parliament when voting was going on. What were you doing? You have done something, you have killed something, and oh, I want to see him alive again. Is it possible? You think so? I dare say they're all ox. They're all animals.
They are not human beings. Mindless society, mindless people. We have animals, we have. We don't have brilliant people, and those are brilliant sleeping. They are sleeping. They don't have any program for this nation, and that is a problem for nation. With this, I wish you all thank you. Bid you all thank you because too long, and I have barked too much. बहुत बोला, बहुत भौंका आपको, शायद भौंका ही लगता होगा उस लोगों को. धन्यवाद भौंका कहने के भी, और धन्यवाद अच्छा कहने के लिए भी, और धन्यवाद कुछ भी कहने के लिए भी. मेरी सेहत पे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला. फिर भी मैं कहूँगा जय भारत, धन्यवाद, बस इतना कहूँगा.